You may be seated, please. कृपा करके बैठ जाओ. कृपा करून बसून घ्या. We will say a quick prayer for those, for the land and for those in authority. It's our duty to pray for them. हम लोग वर्तमान बहुत ही शीघ्र एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे देश के लिए और उनके लिए जो अधिकार में है. आणि आपण ज्या एक लहानशी प्रार्थना करूया जे या देशामध्ये अधिकार करीत आहेत, गाजवित आहे. According to 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4, we should pray for them and pray for the land. और पहला तिमोथी अध्याय 2:1 से लेकर के 4 तक के वचन के अनुसार हम देश के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है. आणि तिमोथेला पहिले पत्र 2 अध्याय 1 ते 4 वचनापर्यंत आपले कर्तव्य आहे की आपण अधिकाऱ्यांकरिता प्रार्थना करावे. Here it says that we should pray for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. और इस प्रकार यहाँ लिखा है राजाओं के लिए और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए, हम उनके लिए प्रार्थना करें. आणि या ठिकाणी लिहिण्यात आलेले आहे राजाकरिता व सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकरिता सुभक्तीने गंभीरपणाने शांतीचे सोपणाने तुम्ही प्रार्थना करा. So your workers in your local assemblies also will teach you how to pray this prayer. और आपके विश्वास शाखा विश्वास भवन में भी आपके सेवकों को हमने ये बताया और इस रीति से आप लोग भी इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए. आणि तुमच्या शाखांमध्ये ज्या प्रकारे तुमचे सेवक तुम्हास सांगतील त्या प्रकारे तुम्ही प्रार्थना विनंती बदल्या करत राहा. And so right now, and at the same time, the Lord will rule over the nation, as it says in Daniel 4 verse 32, the Most High God rules in the kingdom of men and gives it to whomsoever He wills. और उसी समय में हमारा परमेश्वर ही देश के ऊपर जगत के ऊपर राज्यत्व करता है, प्रभुता करता है. दानियल की किताब 4 अध्याय के 32 वचन में जिस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर ही सारे देश के ऊपर सबके ऊपर प्रभुता करता है और जिसको वो चाहता है उसको वो राज्य देता है. आणि आपण आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे आपला परमेश्वरच या पृथ्वी नभोमंडळावरती या जगावरती राज करीतो. आणि ज्या प्रकारे दानियेलाचे पुस्तक 4 अध्याय याच्या 32व्या वचनात लिहिण्यात आलेले आहे की परमेश्वर पूर्ण जगावरती राज करीतो आणि ज्यास हवे त्यास तो राजा बनवितो. He is giving it all those who are now in the positions where they are. God, the Most High, according to Daniel 4:32, God is the one, the Most High has given it to them to rule. जितने भी लोग आज अधिकार में है, सत्ता में है, स्थान में है, परमेश्वर की वचन दानियल की किताब 4 अध्याय के 32 वचन के अनुसार परम प्रधान परमेश्वर ही उनको वहां पर राज्य करने के लिए अधिकार देता है. आणि जे वरिष्ठ अधिकारी आहे राजा आहे त्यांच्याकडे अधिकार आहे. आपण दानियेलाचे पुस्तक 4 अध्यायाच्या 32व्या वचनात पाहतो सर्व काही अधिकार सर्व काही सत्ता परमेश्वर त्यास देत आहे. At the same time, the devil also will try to bring all kinds of trouble in the land, violence and so many things. So we have to pray against the devil's power also. उसी समय में इस देश के विरोध में अशांति लाने के लिए, उपद्रव लाने के लिए, झगड़ा लड़ाई होने के लिए शैतान भी कई प्रकार की रीति से प्रयास करता है. तो उसको विरोध करने के निमित्त भी हमें प्रार्थना करना चाहिए. आणि जे आहे त्याच वेळेमध्ये शैतान जो आहे अशांती घेऊन येतो, गोंधळ घेऊन येतो, भांडण तंटा घेऊन येतो. त्यासाठी देखील शैतानाच्या विरोधी कार्यासाठी आपल्याला प्रार्थना विनंती करावी लागेल. The word of God says when Jesus died on the cross of Calvary, He fully disarmed Satan and all his demons. और प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पे अपने आप को दे दिया उस समय में उसने शैतान उसकी सारी शक्तियों को संपूर्ण रीति से नेस्तनाबूद कर दिया. आणि जेव्हा आपला प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर खेळण्यात आला त्यावेळेमध्ये शैतानाचे सर्व ताकद शक्ती तो जे आहे नाहीसा केलेला आहे. Then through his death He put him and all these demons, Satan and all the demons, to open shame by defeating them. और उसको और उसकी सारी सेनाओं को संपूर्ण रीति से विनाश करते हुए पराजित करते हुए खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया. आणि जे आहे सर्व शैतानाची शक्ती व त्याच्या दूतास तो नाश करीत जे आहे उघडे जे आहे परमेश्वराने त्याचे तमाशा केले. Then through his death He triumphed over Satan and all the demons by destroying him. और and उसको all of them. और कलवरी क्रूस में उन्हें संपूर्ण रीति से विनाश करते हुए उसके ऊपर उसने हमें जय ध्वनि सुनाया है. आणि वधस्तंभावर पूर्णपणे त्याचा नाश करीत एक जयाची ध्वनी परमेश्वराने ऐकवली आहे. He crushed the head of Satan through his death.
यीशु के मृत्यू के द्वारा शैतान के सिर को उसने कुचल डाला. येशूच्या मृत्यूच्या द्वारे शैतानाचे मस्तक डोके परमेश्वराने फोडून टाकिले. He took total victory through his resurrection. पुनरुत्थान के द्वारा उसके ऊपर संपूर्ण जय उसने पा लिया. पुनरुत्थानाच्या द्वारे परिपूर्ण जय परमेश्वराने त्यावर प्राप्त केले आहे. When he arose by the mighty power of God, all those demons, Satan and all this evil who brings, and all these evil spirits that bring all kinds of evil to mankind, they remain crushed under his feet. और जब वो पुत्रत्व की आत्मा के द्वारा जब जी उठा, उस समय में इस संसार में अशांति को, अशुद्धता को लाने वाले सारे शत्रु शैतान की शक्तियों को संपूर्ण रीति से उसने विनाश कर डाला. आणि जेव्हा पुत्राच्या आत्म्याने जेव्हा तो उठविला गेला, त्यावेळेस या जगामध्ये जे अशांती कार्य करीत होती त्यास पूर्णपणे परमेश्वराने नाहीसे केले. The victory he has won through his death and resurrection shows he is the Lord of hosts, the Lord of the heavenly armies. और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा जो जय यीशु मसीह को मिला है, उसके द्वारा वो सारे स्वर्गीय सेनाओं का अधिपति होकर के दिखाई देता है. आणि मृत्यूच्या द्वारे मृत्यूवर जे परमेश्वराला जय विजय प्राप्त झाले आहे, त्याच्याद्वारे तो सर्व स्वर्गीय सेनाचा तो अधिकारी झाला आहे. So you're going to pray now. We are going to pray according to 1 Timothy chapter 1. Pray for those in authority that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Let us pray. इसके लिए आइए हम लोग पहला तिमोथी की किताब उसकी दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में जिस प्रकार लिखा हुआ है, हम लोग राजाओं और सारे ऊंचे पद वालों के निमित्त इसके लिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए, हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे. यास्तव या आपण तिमोथेला लिहिलेले पहिले पत्र दुसरे अध्याय दुसऱ्या वचनानुसार राजा करिता व सर्व अधिकाऱ्यांकरिता शांतीने व स्वस्थपणाने जे आहे ते राज करण्याकरिता या आपण सगळे मिळून प्रार्थना करूया. Claim his name as the Lord Most High and the Lord of hosts. Lord Most High. This speaker is not clear. Claim his name as the Lord Most High and the Lord of hosts. We are hearing it from there. We want to hear it from here. Claim his name as the Lord Most High and the Lord of hosts. और हम लोग उस सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम को दावी करते हुए हम लोग वर्तमान अभी प्रार्थना करेंगे. आणि आपण त्या सेनाधीश परमेश्वराचे उच्चार करीत आपण आता प्रार्थना करणार आहोत. Hallelujah. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. आपण प्रार्थना करूया. Oh, Jesus Christ, the Lord Most High, the Most High God rules in the kingdom of man, gives it to whomsoever he wills. Yes, pray for all those in authority that they may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Give them wisdom, Lord, to rule peaceably. Oh, give them, Lord Jesus, oh, that godly fear, so that we can also live in all godliness and also an honest life, so that we can live in all honesty. The country also be stable economically. People be, oh Lord, financially, Lord, stable. Pray now against the devil's power that tries to bring commotion and trouble in the country. Oh, Satan, Jesus, through his death has fully disarmed you and put you over shame by defeating you through his death, triumphing over you through his death. You are destroyed. Your head is crushed. We claim the victory in the name of Jesus. Reduce and surrender on us. Now your head is crushed. Don't have any wisdom and power to work against the people, against this land. In the mighty name of Jesus, when you arose by the mighty power of God. Oh Lord, forever and ever that Satan and all these demons remain destroyed under your feet. We claim it, Lord. We claim it. Now you believe what you have claimed. वर्तमान जो आपने दावी किया है आप उसको विश्वास करो. जे काही तुम्ही उच्चारले आहे त्यावर तुम्ही विश्वास ठेवा. Ephesians 1 verse 19 in English says, when you believe his word, the exceeding greatness of his power will execute it in your life. ये एफिसी किताब पहले अध्याय के 19 वचन में अंग्रेजी इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब आप उसके वचनों को विश्वास करोगे तो उसकी सामर्थ, उसकी असीम शक्ति का प्रभाव का कार्य हमारे जीवन में शुरू हो जाएगा. आणि जेव्हा आपण एफेसी पत्र पहिल्या अध्यायाच्या 19व्या वचनात लिहिण्यात आलेले आहे, ज्यावेळेस आपण परमेश्वरावर विश्वास Amen. करतो. Now you speak in tongues believing that word you have just claimed. अभी तक आपने जो प्रार्थना करके वचनों को दावी किया है उसको विश्वास करते हुए आइए अन्य भाषा में हम लोग बातें आणि करें. जे काही विश्वास करून आपण उच्चारले आहे या आपण अन्य भाषांमध्ये म्हणून प्रार्थना करूया. Receive that anointing. एक अभिषेक को पाले. एक अभिषेक प्राप्त करा. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord.
Amen. Yes, you do this whenever you can. If every day it's possible, do it. You'll see God's blessings in the locality, village, locality, district, town, state, country. You'll see God doing it. For all of us shall we praise God. आपको जब कभी भी समय मिलता है, हर एक दिन हो सके तो आप इसके लिए प्रार्थना करना। अगर आप इस रीति से प्रार्थना करोगे तो जिस क्षेत्र में आप रहते हो, जिस जिला में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस राज्य में आप रहते हो, आप देखोगे कि आपकी इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार के काम करते हुए देश में शांति समाधान लेकर के आएगा। आइए इस विश्वास के साथ हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। जेव्हा केव्हा तुम्हाला वेळ मिळेल याकरिता तुम्ही प्रार्थना करीत जा। ज्या गावी, ज्या जिल्ह्यामध्ये, ज्या राष्ट्रामध्ये तुम्ही राहता, ज्या देशामध्ये राहता, त्याकरिता तुम्ही प्रार्थना करीत जा। त्यावेळेस परमेश्वर त्याच्या सामर्थ्याने आमच्यासाठी कार्य करेल या विश्वासाने आपण देवाचा धन्यवाद करूया। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. He is the Lord Most High, He is the Lord of hosts, shall we praise Him. और वही परम प्रधान परमेश्वर है, वही सेनाओं का यहोवा है, इसलिए उसका धन्यवाद करें। आपला परमेश्वर परम प्रधान आहे, तो सेनाधीश आहे, यासाठी आपण देवाचा धन्यवाद करूया। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. For the word of God is going to speak to us, shall we praise Him. परमेश्वर का वचन हमसे बात करने के लिए भी हम धन्यवाद करेंगे। देवाचे वचन आपल्यासोबत बोलण्याकरिता आपण देवाचा धन्यवाद करूया। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let us turn our Bibles to Isaiah the 22nd chapter. आइए हमारे धर्मशास्त्र को यशायाह उसके 22वें अध्याय की ओर पलटाएं। या आपले पवित्र शास्त्र आपण यशायाचे पुस्तक 22वें अध्यायाकडे उघडूया। Please read from verse 20 to 23. और उसके 20 से लेकर के 23 तक के वचनों को पढ़ेंगे। आणि 20 वचनापासून ते 23 वचन आपण वाचूया। त्या समय असे होईल की माझा सेवक हिल्कियाचा पुत्र एल्याकीम यास मी बोलावीन, त्याला तुझा झगा घालीन, त्याला तुझा कमरबंद कशीन, तुझी सत्ता त्याच्या हाती देईन। तो यरूशलेमेकराचा व यहुद्यांचा घराण्याचा पिता होईल। दाविदाच्या घराण्याची किल्ली त्याच्या खांद्यावर ठेवीन। त्याने उघडले तर कोणी बंद करणार नाही, त्याने बंद केले तर कोणी उघडणार नाही। मजबूत ठिकाणाच्या खुंटीसारखे मी त्याला स्थिर करीन, म्हणजे तो आपल्या पित्याच्या घराण्यास वैभवशाली असा होईल। उस समय मैं हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास एलियाकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा और उसके कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और वो यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वो खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वो बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। और मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा और वो अपने पिता के घराने के लिए विभव का कारण होगा। And it shall come to pass in that day that I will call my servant Eliakim the son of Hilkiah, and I will clothe him with thy robe, and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy garment into his hand, and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah, and the key of the house of David will I lay upon his shoulder, so he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open, and I will fasten him as a nail in a sure place, and he shall be for a glorious throne to his father's house. So here, first of all, to get an idea about what is written in this chapter, और इस अध्याय में क्या लिखा है इसके विषय में एक पूर्व ज्ञान प्राणी के लिए। आणि या अध्यायामध्ये काय लिहिण्यात आलेले आहे हे आपण समजून घेण्याआधी here verse 1 to 14 is a vision about Jerusalem. और इस अध्याय के 1 से लेकर के 14 तक के वचन में यरूशलेम के संबंधित एक दर्शन है। आणि या अध्यायामध्ये पहिल्या वचनापासून ते 14 वचनापर्यंत यरूशलेम संबंधाने एक दर्शन आहे। Then from verse 15 to 25 is about the
treasurer who is compared to a nail in the house of God. He is compared to a nail in the house of God. और 15 से लेकर के 25 तक के वचनों को देखने के समय में एक खजाने के बारे में लिखा है जो कि परमेश्वर के भवन में एक खूंटी के साथ तुलनात्मक रीति से बताया गया है. आणि जे आहे 15 वचनापासून ते 25 वचनापर्यंत या ठिकाणी जे आहे जे एक खजाना आहे ते का त्याची तुलना खुंटी प्रमाणे करण्यात आलेली आहे. Before the treasurer who was going to be replaced was Shebna. और ये जो खजाना है जिसको शबना से उसको बदला गया है. आणि जे खजाना आहे त्याला बदलण्यात आलेले आहे. That is mentioned in verse 19. God was going to remove him. I will drive thee from thy station and from thy state shall he pull thee down. And also he referring to Shebna, it's mentioned in verse 25. In that day, said the Lord of hosts, shall the nail that is fastened in the sure place be removed and be cut down and fall, and the burden that was upon it shall be cut off, for the Lord had spoken it. और 19 वचन को पढ़ने के समय में मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा. और 25 वचन को पढ़ने के समय में सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय में खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी वो ढीली हो जाएगी और काट कर गिराई जाएगी और उस पर का बोझ गिर जाएगा. और यहोवा ने ये कहा है. आणि 19व्या वचनात आपण पाहतो, मी तुला तुझ्या हुद्द्यावरून काढून टाकीन, तो तुला तुझ्या पदावरून खाली ओढील. आणि 25व्या वचनात वाचतो, सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, त्या दिवशी मजबूत ठिकाणी बसलेली खुंटी ढळेल, ती कापली जाऊन खाली पडेल व ती वरील भार छेदला जाईल, कारण परमेश्वर हे बोलला आहे. Shebna, who was the treasurer, he was unfaithful, so he was removed. शबना उस समय में एक खजांची होकर के दिखाई दिया, किंतु वो विश्वास योग्य ना होने के कारण उसे निकाल दिया गया. आणि शेबना जो आहे तो विश्वासयोग्य नसल्या कारणास्तव त्याच्या हुद्द्यावरून त्याला हाकलून देण्यात आलेले आहे. Verse 20 about Eliakim, it says, he the son of Hilkiah, he was a faithful steward. और एलियाकीम जो हिलकिया का पुत्र है वो अब से लेकर के एक विश्वास योग्य एक खजांची होकर के दिखाई देगा आणि जो या भंडारी होकर के दिखाई देगा. आणि हा जो हिल्कियाचा पुत्र एल्याकीम आहे तो एक विश्वासयोग्य असल्या कारणास्तव शबेनाच्या जागी तो येणार असल्या आहे असे आपण पाहतो. So the literal fulfillment of this verse was seen or was through Eliakim the son of Hilkiah who replaced Shebna. और इस वचन का जो अक्षरी रीति से जो घटना का पूर्ण होना शबना के स्थान में एलियाकीम के आने के द्वारा पूरा होता है. आणि या ठिकाणी सांगण्यात आलेली जी ही गोष्ट आहे ते जे आहे शबनाच्या जागी एल्कियाम आल्याच्या द्वारे ते पूर्ण होते. But prophetically it was fulfilled in the life, death, resurrection and the ministry of the Lord Jesus Christ. लेकिन इसी वचन का भविष्यवाणी रीति से इस बात का पूर्ण होना प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, उसकी सेवकाई के द्वारा, मरण के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा पूरा होता है. आणि या ठिकाणी सांगण्यात आलेली जी भविष्यवाणी आहे आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जीवनाच्या द्वारे, त्याच्या सेवेच्या द्वारे आणि त्याच्या मृत्यूच्या द्वारे आणि पुनरुत्थानाच्या द्वारे पूर्ण होत आहे. The name Eliakim means God establishes. और एलियाकीम शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर जो स्थिर करता है. आणि एल्कियाम या शब्दाचे अर्थ असे की परमेश्वर स्थिर करीतो. Hilkiah, Jehovah protects. हिलकिया शब्द का अर्थ है यहोवा सुरक्षाकारी. आणि हिल्किया या शब्दाचे अर्थ परमेश्वराचे संरक्षण असे आहे. The Lord Jesus Christ and his ministry was established by God. और प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई जो है वो परमेश्वर के द्वारा स्थिर किया गया है. आणि जी सेवा आहे ते आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे स्थिर करण्यात आली आहे. Now God the Father protects what
he has established. और जिसको उसने स्थिर किया वर्तमान पिता परमेश्वर उन्हें सुरक्षा देता है। आणि ज्याने त्या स्थिर केले तो पिता परमेश्वर त्या सुरक्षा देतो. Now, this Shebna can be taken also as a type of man when God first created man and put him on this earth. ये शबना को हम लोग एक मनुष्य के साथ भी तुलनात्मक रीति में देख सकते हैं, उस मनुष्य को जिसको परमेश्वर ने सबसे पहली बार सृष्टि करके इस पृथ्वी पर ला करके रखा था. आणि या शेबनानाची तुलना आपण एका मनुष्यासोबत करू शकतो ज्यास परमेश्वराने प्रथम बनवून या पृथ्वी तलावर ठेवले. So, Shebna was brought to the place of honor and trust by being kept in that government of Judah, in that house as the treasurer. और शबना को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पदवी में रखते हुए यहूदा के घर में भंडारी के समान एक आदरणीय स्थान में उसे रखा गया. आणि या शेबनानास जे आहे चांगले आदर सत्कार करीत त्याला यहुद्यांच्या घरामध्ये एक खजिनदारची पदवी देण्यात आली होती. But he became a traitor to that government. He betrayed that trust. और उसने वहां पर अपने उस भरोसा को उसने तोड़ दिया और उस सरकार के लिए उस राज्य के लिए वो गद्दार होकर के बदल गया. आणि जे आहे तो त्या ठिकाणी त्याचे विश्वास गमावलेला आहे, तो त्या ठिकाणी गद्दारून दिसून आलेला आहे आणि त्याच्यावर असलेले भरोसा देखील तो गमावलेला आहे. So when we look at the creation of man, जब हम लोग मनुष्य की सृष्टि को देखते हैं, जेव्हा आपण मनुष्याची सृष्टी आपण पाहतो, we read in Psalm 8, भजन संगीता के 8वें गीत में 8वें स्तोत्र संहितामध्ये when man was created, he was crowned with glory and honor in chapter 8 and verse 5. Psalm 8 verse 5. भजन 8 के 5 में लिखा है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया उस समय में महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा. आपण जे आहे 8वें स्तोत्र याच्या 5व्या वचनात पाहतो, जेव्हा परमेश्वराने मनुष्याची सृष्टी केली त्याला गौरव व थोरवी यांनी मुकुटमंडित केले आहे. God gave him certain responsibilities on this earth. उस समय में पृथ्वी पर कुछ कर्तव्य भी मनुष्य को दिया गया आणि त्यावेळेमध्ये मनुष्यास काही कर्तव्य काही काम देण्यात आले होते. He was given dominion over all things on the earth. इस पृथ्वी के सारी बातों के ऊपर उसको एक अधिकार दिया गया आणि या जगातील सर्व गोष्टीवर त्याला एक अधिकार देण्यात आलेला होता. But he became unfaithful to God and betrayed that trust. लेकिन वो परमेश्वर के निमित्त अविश्वास योग्य होते हुए उस भरोसा को उसने नष्ट कर डाला. परंतु जे आहे तो अविश्वास योग्य दिसून असल्या कारणास्तव देवाचे जे भरोसा होते ते त्याने तोडून टाकले. Just like Shebna was in correspondence with a foreign king of Assyria, और जिस प्रकार शबना अशूर के राजा के साथ मिल करके आणि जेव्हा शबनान अशूरच्या राजासहित तो मिळून गेला, in order to deliver this kingdom of Judah into his hand, यहूदा के राज्यत्व को अशूर के हाथ में सौंप देने के निमित्त आणि ज्या यहूदाचे राज्य त्याच्या हाती सोपून देण्याच्या कारणाने man whom God created became unfaithful, betrayed the trust and joined himself to Satan, the enemy of God. उसी प्रकार मनुष्य भी परमेश्वर के सम्मुख में अविश्वास योग्य होते हुए शत्रु शैतान के हाथ में अपने आप को सौंप दिया और परमेश्वर का शत्रु होकर के बदल गया. आणि याच प्रकारे मनुष्य देखील जे आहे अविश्वास योग्यतेच्या कारणाने जे आहे शैतानाच्या हाती तो स्वतः स्वाधीन केलेला आहे आणि देवाचा तो विरोधी बनलेला आहे. Judah, we can say, for us, it can be taken as a type of the kingdom of God. यहूदा के राज्य को हम लोग परमेश्वर के राज्य के साथ तुलनात्मक रीति में देख सकते हैं. आणि यहूदाचे जे राज्य आहे आपण देवाच्या राज्यासहित त्याची तुलना करू शकतो. That foreign king, that enemy nation, that kingdom can be taken as that
kingdom spiritually, the kingdom of Satan. और ये शत्रु या वो शत्रु का राज्य जो है वो शैतान के राज्य के स्वरूप हम लोग तुलनात्मक रीति में देख सकते हैं. आणि हे जे शत्रूचे राज्य आहे याची तुलना आपण शैतानाच्या राज्यासहित करू शकतो. Here we read, God has a kingdom, but Satan too has a kingdom. Matthew's Gospel, chapter 12, verse 26. And Satan, if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall then his kingdom stand? और जिस प्रकार परमेश्वर के एक राज्य है वैसे ही शैतान का भी एक राज्य है, जिसके विषय में मत्ती रचित सुसमाचार के 12 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा हुआ है कि यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा. आणि ज्या प्रकारे एक परमेश्वराचे राज्य आहे त्याच प्रकारे शैतानाचे देखील एक राज्य आहे. याविषयी मत्ती सुवर्तमान 12 अध्याय याच्या 26व्या वचनात लिहिण्यात आलेले आहे. शैतान जर शैतानाला काढीत असेल तर त्याच्या राज्यात त्याच्यात फूट पाडली आहे, मग त्याचे राज्य कसे टिकणार. Shebna, who was the treasurer, शबना जो भंडारी था आणि जो शबनान खजिनदार होता should have had a very close or intimate relationship with the king, in that keeping that good rapport with the king. उसको आवश्यकता कि वो अपने राजा के साथ एक बहुत ही सुंदर तालमेल बनाए रखना चाहिए था. आणि त्याला हे करायचे होते की त्याच्या राजासोबत जे आहे समेट करून जे आहे व्यवस्थित राहायचे होते. But on the contrary, he was close to the king of Assyria. किंतु इसके विरोध में हम देखते हैं कि वो अशूर के राजा के बहुत ही समीप दिखाई दिया. परंतु त्याच्या विरोधामध्ये जे आहे तो अशुराच्या राजाचा समीप दिसून आला. Similarly, this is what happened to Adam and Eve when God first created them. और इसी प्रकार की बातें आदम और हव्वा के जीवन भी हम देखने पाते हैं जब परमेश्वर ने उसको सृष्टि करके इस अदन के उद्यान में रखा था. आणि याविषयी जे असे जे आहे आपण आदम हवा विषयी पाहतो, परमेश्वराने त्यांना सृष्टी करून जे आहे त्या ठिकाणी ठेवले होते. When God created Adam and Eve, He created them, kept them in the Garden of Eden. He breathed into man's nostrils the breath of life. He formed them out of the dust of the ground, breathed into man's nostrils the breath of life. He became a living soul. और परमेश्वर ने मनुष्य को According to Genesis chapter 2, verse 7. परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की धूलि में से सृष्टि किया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया. इसी रीति से मनुष्य जीवित प्राणी बन गया. और परमेश्वर ने उस प्रथम मनुष्य को ला करके अदन उद्यान में रखा. उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 वचन में. आणि जे आहे परमेश्वराने मनुष्याला बनवून जे आहे मातीने रचले व त्याच्या नाकपुड्यात जीवनाचा श्वास फुकिला. याविषयी आपण उत्पत्तीचे पुस्तक 2 अध्याय 7व्या वचनात वाचू शकतो. God gave man a commandment not to, he could eat of the fruit of the tree of life, the fruit of all manner of good trees in the garden, all the good trees of all manner of fruit, the fruit trees of all manner of fruit in the Garden of Eden. But he was not to eat only one tree, the fruit of one tree, the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, according to Genesis chapter 2, verse 16 and 17, which you can read later. उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसके 15 और 16 वचन को देखने में परमेश्वर ने मनुष्य को अदन के उद्यान में बना करके रखने के बाद वहां पर दिखाई देने वाले भांति भांति के वृक्षों के फलों को खाने के लिए अनुमति दिया. जीवन के वृक्ष के फलों को खाने के लिए भी अनुमति दिया, सिवाय एक के कि परमेश्वर ने कहा भले और बुरे के ज्ञान वाले इस वृक्ष के फल को तू कभी भी नहीं खाना. आणि जेव्हा परमेश्वराने मनुष्यास बनविले त्यावेळेस आपण पाहतो उत्पत्तीचे पुस्तक 2 अध्यायाच्या 16-17 वचनात पाहू शकतो. परमेश्वराने मनुष्याला बनवून एक आज्ञा केली की या ठिकाणी असलेले विविध झाडाचे फळ तू खाऊ शकतोस, परंतु जे आहे जे बरे वाईटाचे ज्ञान देणारे झाड आहे त्याचे फळ तू कदापि खाऊ नये. But what happened to man? Genesis chapter 3 verse 1 to 7 says, they joined to Satan
listened to his voice and disobeyed God's commandment. लेकिन देखो मनुष्य का क्या हुआ। उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय के 1 से लेकर के 7 तक के वचनों को पढ़ करके देखने के समय में मनुष्य शैतान से जा मिला, उसकी आवाज सुन करके उसकी आज्ञा को मानने लगा। आणि आपण परंतु मनुष्याविषयी पाहतो उत्पत्तीचे पुस्तक 3 अध्याय 1 वचनापासून ते 7 वचनापर्यंत पाहू शकतो। मनुष्य जे आहे शैताना जवळ गेलेला आहे आणि त्याचे आज्ञा त्याचे स्वर तो ऐकू लागला आहे। From that day they became an enemy, the enemies of God and strangers, whereas before Adam was called the son of God. उसी दिन से लेकर के ये मनुष्य आदम और हव्वा देखो ईश्वर का शत्रु बन गया, परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के लिए वो परदेसी हो गया, जबकि इससे ये घटना होने से पहले वो ईश्वर का पुत्र करके कहलाया था। आणि त्यावेळेपासून जे आहे आदम आणि हव्वा देवाचे विरोधी बनले आणि ते परदेशी झाले, त्याआधी ते देवाचे पुत्र बनण्यात येत होते। Shebna was an enemy to God and to God's purpose. Or likewise, when man fell, by and by all the descendants of men who also disobeyed like Adam became the enemies of God and lived contrary to the purpose of God. शब्ना परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य का विरोधी हो गया, वैसे ही मनुष्य भी देखो परमेश्वर के राज्य का विरोधी होते हुए पाप में जीवन जीने लगा, और जितने भी उस आदम के वंशावली हुए वो सभी परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के शत्रु होकर के दिखाई देने लगे। आणि ज्या प्रकारे शब्रान जे आहे देवाच्या राज्याचा विरोधी झाला, त्याच प्रकारे पहा मनुष्य पापात पडून आदम आणि त्याचे सर्व वंश जे आहे पापाचे स्वाधीन झालेले आहे आणि देव आणि देवाच्या राज्याचे विरोधी झाले आहे। When man disobeyed God's word, he died. जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, मृत्यु आ समाया। आणि जेव्हा मनुष्य अवज्ञा केलेला आहे, आज्ञाचा उल्लंघन केलेला आहे, पहा मरण मृत्यू आलेले आहे। As you can read from Genesis chapter 3, he was still very much alive physically. और उत्पत्ति की किताब के 3 अध्याय को देखने के समय में शारीरिक दशा में तो वो जीवित दिखाई दे रहा है। आणि उत्पत्तीचे पुस्तक 3 अध्यायामध्ये पाहू शकतो तो शारीरिक रीत्या तो जिवंत दिसून येत होता। As I shared with you from Genesis chapter 2 verse 7, when God breathed through his spirit into man's nostrils, that breath brought life, eternal life in his soul. और जैसे कि मैंने आपको उत्पत्ति की किताब के 2 अध्याय के 7 वचन से बताया था कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की उस समय में उसके नथुन में श्वास फूंक दिया, वो जो जीवन का श्वास फूंक दिया वो अनंतकालीन जीवन था। आणि जे आहे आपण उत्पत्तीचे पुस्तक 2 अध्याय 7व्या वचनानुसार सांगितले की जेव्हा परमेश्वराने मनुष्यास बनविले त्याच्या नाकपुड्यात जीवनाचा श्वास फुकिला, त्याच्याद्वारे तो सर्वकालिकरित्या जिवंत राहू शकत होता। When the life of God, eternal life, departed from man, he was separated from God and from that eternal life. That is called spiritual death. किंतु वो जो अनंतकालीन जीवन जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, वो जीवन जो मनुष्य के अंदर से चला गया, जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर एक मृत्यु दिखाई दिया, जिसे आत्मिक मृत्यू करके कहा जाता है। आणि जेव्हा मनुष्यातून सर्वकालिक जीवन नाहीसे झाले त्यावेळेमध्ये त्याच्या जीवनामध्ये मरण दिसून आले, आणि हे जे मरण आहे हे आध्यात्मिक मरण दिसून येते। The word of God says in Ephesians chapter 1, chapter 2, the first verse, we men are seen dead because of their sins and trespasses. और एफिसी की किताब की 2 अध्याय के पहले वचन में मनुष्य जो है उसके पाप और अधर्म के कारण मरे हुई अवस्था में दिखाई दिए। इब्री लोकास पत्र 2 अध्यायाचे पहिले वचनात सांगण्यात येतात की मनुष्य आपल्या अपराध आणि आपल्या पातक्यांमुळे मृत्यू झालेले होतात। While man still has this physical life, man will only have one life. क्यों मनुष्य के जीवन में अभी भी एक शारीरिक जीवन है? क्योंकि मनुष्य के पास केवल अभी एक ही जीवन है। आणि का मनुष्याकडे एकच शारीरिक जीवन आहे? कारण जे आहे जीवन एकच आहे। So in this one life, he must receive that eternal life which that first man lost. अभी मनुष्य के इस एक जीवन में वो जो पहले परमेश्वर ने जो अनंत जीवन दिया था,
कैसे भी करके उस पहले वाले अनंत जीवन को इस जीवन के रहते रहते दोबारा वो मनुष्य प्राप्त करना चाहिए। आणि जे सर्वकालिक जीवन मनुष्य हरविला होता, गमविला होता, ते या जीवनामध्ये आपण जगत असताना कसेही करून ते सर्वकालिक जीवन प्राप्त करायचे आहे. So, in order to receive that life once again, और एक बार उस अनंतकालीन जीवन को पाने के निमित्त आणि ते सर्वकालिक जीवन पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी the word of God says we must once again be joined to God, separate from Satan and be joined to God. परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार हम इस शत्रु शैतान से अलग होके हमारे परमेश्वर के साथ जा मिलना चाहिए। यास्तव परमेश्वराचे वचन सांगत आहे की शत्रू शैतानापासून आपल्याला विभक्त व्हायचे आहे आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत पुन्हा जोडले जायचे आहे. According to Colossians chapter 1, here in verse 21, we were enemies because of our wicked thoughts. We were enemies to God because of our sinful acts, works. और कोलोसी किताब के पहले अध्याय के 21 वचन में हमारे बुरे कामों के कारण, कल्पनाओं के कारण हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में एक बैरी होकर के दिखाई दिए. आणि आपण कलसिकरास पत्र पहिले अध्याय 21व्या वचनात पाहतो, आपण आपल्या पूर्वी परके व दुष्कर्म करीत असल्या कारणास्तव आपण देवाचे वैरी झालो. So, in order to bring man back into that place to be at peace with God, एक बार परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एकता आने के लिए, मेल मिलाप आने के लिए आणि पुन्हा एकदा मनुष्यांमध्ये जे आहे समेट आणि एकता येण्याकरिता the way of God through because of his great love परमेश्वर के प्रेम के कारण देवाच्या प्रीतीच्या द्वारे was to lay all our sins upon the Lord Jesus Christ. हमारे सारे पापों को देखो उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया. आणि आपले सर्व पाप के पाप जे आहे तो प्रभु येशू ख्रिस्तावर लादून दिला आहे. For all the sins of man, he must pay the price, the wages for all the sins he's laboring for. He has to pay it finally forever and ever in the place of torment called the lake of fire. और जो भी काम हम लोग करते हैं, हम लोग जो भी परिश्रम करते हुए पाप के जो भागीदार होते हैं, वो सारे पापों के कामों को उसके ऊपर डाल दिया गया. आणि आपण जे काही पातके करतो, जे काही पाप करीतो, पहा ते सर्व पातके, सर्व पाप जे आहे त्याच्यावर टाकण्यात आले. But God the Father, because of his great love, the Lord Jesus, because of his great love, according to the eternal purpose of God, और पिता परमेश्वर के प्रेम के कारण, यीशु मसीह के प्रेम के कारण और अनंतकालीन योजना के तहत आणि जे आहे प्रीतीच्या द्वारे, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रीतीच्या द्वारे सर्वकालिक उद्देशाने oh, the Lord Jesus was sent into this world in order to finally take all mankind's sins and also to pay the penalty for all his sins on the cross. प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि सारे मानव जाति के सारे पापों को उठाए और सारे मानव जाति के पापों का प्रायश्चित वो होकर के बदल जाए. आणि यास्तव जे आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताला जगात पाठविण्यात आले आणि सर्व मनुष्याचे पाप जे आहे मोबदल्यारीत्या प्रभू येशू ख्रिस्तावर देण्यात आले. He became the propitiation for all mankind's sins. और वो हमारे सारे मनुष्य के पापों के लिए देखो प्रायश्चित होकर के बदल गया है. आणि पहा सर्व मनुष्याच्या पापाकरिता प्रभू येशू ख्रिस्त मोबदला होऊन बदलला आहे. For the sins we commit, we have to incur the wrath of God. And that lake of fire is the ultimate place where the wrath of God will be revealed against Satan and also all those who have joined themselves to Satan. जितने भी लोग पाप करते हैं उन सारे लोगों के पाप की मजदूरी उनके जीवन में परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आना था और अंत में उसे नरक में भेज दिया जाना था. वो नरक जहां पर शैतान और जितने भी शैतान की बातों को मानते हैं वहां पर उनको भेज दिया जाता है. आणि जे आहे सर्व जे आहे पापांच्या द्वारे मनुष्यावरती देवाचे दंड यायचे होते आणि जे आहे नरकात टाकले जायचे होते, ज्या ठिकाणी शैतान व त्याचे दूत राहतात आणि जे कोणी त्याचे आज्ञेचे पालन करतात त्यांना त्या ठिकाणी टाकण्यात येते. When Jesus, after doing the whole will of God on this earth, finally the time came for him
to give himself as the perfect sacrifice. और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीते हुए पिता की संपूर्ण इच्छा को उसने पूरा किया, और उसका जब समय आया कि वो अपने आप को एक सिद्ध बलि होकर के समर्पण कर दे, आणि ज्या या जगामध्ये राहत असताना प्रभू येशू ख्रिस्ताने पित्याची पूर्ण इच्छा पूर्ण केली, आणि जेव्हा वेळ आले तेव्हा तो स्वतःच अर्पण केलेला आहे. He became the propitiation for our sins because God the Father saw there was no sin in him. और जब यीशु मसीह के अंदर कोई भी पाप पिता परमेश्वर ने नहीं देखा, उस समय में उसको उसने हमारे लिए पाप का एक प्रायश्चित बना दिया. आणि प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये जेव्हा पित्याने कोणतेही पाप पाहिले नाही, तेव्हा आपणाकरिता येशू ख्रिस्ताला मोबदला म्हणून त्याने अर्पण केले. Jesus, a propitiation means he appeased the wrath of God. और प्रायश्चित बनने का मतलब यह है कि पिता का जो क्रोध है उसने अपने ऊपर उसने ले लिया. आणि मोबदला देणे म्हणजे काय? पित्याचे जे क्रोध होते तो आपणावर घेतला आहे. That is, what did he do? The wrath of God which should have come upon us, he took it upon himself. वो जो क्रोध Or he accepted it. वो जो क्रोध जो हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध आना था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उस क्रोध को आने के लिए समर्पण कर लिया, उस क्रोध को अपने ऊपर ग्रहण कर लिया. आणि जे क्रोध आपणावर यायचे होते, पहा प्रभू येशू ख्रिस्त ते क्रोध आपणा स्वतःवर घेतलेला आहे आणि स्वतः तो स्वीकार केलेला आहे. Untold sufferings in his body and mentally that the Lord Jesus went through was because of our sins. प्रभु यीशु मसीह जो दर्दनाक वेदना और पीड़ाओं से गुजरा, जो मानसिक और शारीरिक दर्द को यीशु ने उठाया, वो सब कुछ मात्र केवल हमारे ही पापों और गुनाहों के कारण हुआ था. आणि जे काही कष्ट, जे काही त्रास, जे काही छळ प्रभू येशू ख्रिस्ताने सहन केले, ते सर्व आपल्या पातकांसाठी, आपल्या पापासाठी ने सहन केले. Now God the Father has accepted that sacrifice. Therefore, whosoever believes in the Lord Jesus accepts that their sins were taken by him. और इसी कारण से कि प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को पिता ने ग्रहण कर लिया. अब जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है और जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है, उनके सारे पाप और गुनाहों को पिता परमेश्वर माफ कर देता है. आणि पिता परमेश्वराने येशू ख्रिस्ताला स्वीकार केल्या कारणास्तव जे कोणी प्रभू येशू ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवितात, त्यांचे सर्व अपराध, त्यांचे सर्व पापे प्रभू येशू ख्रिस्त क्षमा करीतो. Even if there's anyone here this morning, if you will accept that for your sins Jesus took your place, bore the wrath of God which should have come upon you. अगर आज भी यहाँ पर अगर कोई है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करोगे, तो आपके सारे गुनाह और पाप जो जिसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आना था, वो आपके जीवन से मिटा देगा. आणि जे आहे आज जर तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताला तुमचे तारणकर्ता म्हणून स्वीकार कराल, तर परमेश्वर तुमचे सर्व अपराधांची क्षमा करेल आणि जे क्रोध तुमच्यावर यायचे होते ते तो स्वतःवरती घेईल. If you will be sad for your sins that made Jesus to go through that sufferings, अगर तू अपने जीवन में अपने पाप को स्वीकार करेगा और यीशु को उस क्लेश में जाने के लिए देगा, आणि जर तू एक गोष्ट प्रभू येशू ख्रिस्त उद्धारकर्ता तारणार आहे म्हणून तू स्वीकार करशील, तर if you will turn to God no more to return to that sins, और परमेश्वर की ओर फिर करके मैं पाप की ओर दोबारा ना जाऊंगा करके बोलेगे, तो आणि जे आहे तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे ओढून पुन्हा पापाकडे जाऊ नका असे मी आज्ञा केली if असता. you will admit your sins, confess before God and forsake it, और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पाप को स्वीकार करके उसको छोड़ देने से, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे सर्व पापे कबूल करून आपण ते सोडून दिले असता, right now the blood of Jesus will cleanse your heart. Wherever you may be sitting in this hall or anywhere else where you are hearing this sound, आप लोग दूर और पास में कहीं पर भी बैठ करके परमेश्वर के वचन को सुनने से अभी ही परमेश्वर आपके सारे पाप और गुनाहों को क्षमा कर देगा, धो देगा. आणि जर तुम्ही इथे कुठेही बसले असाल तरी या वचनांवरती विश्वास कराल तर प्रभू येशू ख्रिस्ताचे रक्त तुमचे सर्व पाप अपराध क्षमा करेल. then ask Jesus to come into your life to be your Lord, become your Lord and Savior. और उसके
उसके बाद परमेश्वर को अपने जीवन में, हे प्रभु तू मेरे जीवन का प्रभु बन जा, हे मेरे जीवन का तू ही राजा बन जा करके हम उसको पुकारे। आणि आपण यानंतर जे आहे, हे प्रभु तू माझ्या जीवनाचा राजा बन, तू माझा जीवनाचा धारण करता बन म्हणून आपण स्वीकार Believe करूया। he not only died for you, he rose again on the third day. वो तुम्हारे लिए मरा और देखो वो तीसरे दिन जी भी उठा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या स्तव तो मरण पावला, पहा तिसऱ्या दिवशी तू पुन्हा जिवंत झाला आहे। Today you will be forgiven your sin. Today you will become a child of God. ऐसा करने से आज तू परमेश्वर का संतान बनेगा और आज ही तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। असे केल्याने जे आहे तुम्ही आज देवाचे पुत्र म्हणण्यात याल, आज तुमचे पाप क्षमा होतील। For a minute shall we close our eyes and pray. एक मिनट के लिए आंखों को बंद करके आओ हम प्रार्थना करें। एक मिनिट आपले डोळे बंद करून या, आपण एक मिनिट प्रार्थना Those who करूया। want to surrender your life to Jesus right now, ask pardon for your sins, accept Him as your Lord and Savior. जितने भी लोग अपने पाप की क्षमा चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हुए उससे पाप की क्षमा याचना करो। आणि जितके पापापासून क्षमा सुटका प्राप्त करू इच्छिता, आपल्या देवाकडे येशूकडे पहा आणि पापासाठी तुम्ही विनंती करा। Amen. Right now the blood of Jesus will forgive you. अभी प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको क्षमा करेगा। तो प्रभू येशू ख्रिस्त आता तुमचे पापे क्षमा करेल। Oh, let's pray. आइए हम प्रार्थना आपण करें। प्रार्थना करू। Hallelujah, Lord, save, oh God, such who have not accepted you as their Lord and Savior. Lord, have mercy, oh God, mercy, oh God. Forgive their sins, oh God. Cleanse them in your precious blood. Reconcile them to God. Lord, we pray in the name of Jesus right now. Lord, deliver them from all the clutches of sin and Satan and hell in the name of Jesus. Hallelujah. Shall we praise God? आइए हम स्तुति आपण करें। देवाचा धन्यवाद करूया। Hallelujah. Hallelujah. Now the blood of Jesus not only forgives you and cleanses you, ना केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू आपकी पाप क्षमा करता है और शुद्ध करता है, फक्त परमेश्वर तुमचे पाप क्षमा करतो आणि शुद्ध करतो एवढेच नव्हे। when you believe in that propitiatory sacrifice that He died in your place and bore the wrath of God for you, और जब आप इस बात को विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके स्थान में मरा है और वो आपके लिए प्रायश्चित हुआ है, आणि जेव्हा तुम्ही विश्वास करता की परमेश्वर तुमच्यासाठी मरण पावलेला आहे आणि तुमच्याकरिता तो मोबदला झालेला आहे, your status, you're no more called an unrighteous person or a wicked person. Now you are called the righteous. अभी आपकी नाम और आपका परिस्थिति बदल गया। आप जो पहले अधर्मी होकर के दिखाई देते थे, वर्तमान परमेश्वर ने आपको उस स्थान से निकाल करके धर्मी बना दिया है। आणि आता तुमचे पाचरण बदललेले आहे। तुम्ही जे आधी अनितिमान होता, पहा तुम्ही आता नीतिमान होऊन बदलले गेले आहात। That's what it says, Romans 5:9. Much more than being now justified by His blood, you are counted as righteous, as though you never ever committed any sins in your life. रोमी की किताब 5 अध्याय के 9 वचन में जिस प्रकार लिखा हुआ है, उसकी अभी वर्तमान उसके लहू के द्वारा तुम धर्मी ठहरे, अर्थात जैसे तुमने पहले कभी पाप ही ना किया हो। आणि आपण रोमकरास पत्र 5 अध्याय 9 वचनामध्ये पाहतो, अनाथाच्या रक्ताने तुम्ही नीतिमान ठरविण्यात आलेले आहात। याच्या आधी याचे अर्थ असे की याच्या आधी तुम्ही कधी पापच केले नाही। So we shall be saved from wrath through Him. और इसके द्वारा हम उसके क्रोध से भी बच निकले हैं। आणि याच्याद्वारे आपण क्रोधापासून देखील तारले गेले आहोत। Verse 10, we are no more enemies now. Now we are reconciled by the death of Jesus. 10 वचन में लिखा हुआ है कि अब हम उसके बैरी नहीं हुए कि तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उसका मेल हो गया है। आणि 10व्या वचनात लिहिण्यात आलेले आहे, आता आपण त्याचे शत्रू नाही तर आपला समेट झालेला आहे। That's what we read in Colossians chapter 1 verse 20. He has made peace through the blood of His cross. इसी कारण से कोलोसी किताब उसके 1 अध्याय के 20 वचन में लिखा हुआ है, उसके लहू के द्वारा उसने हमारा मेल मिलाप करा दिया। आणि कलसीग्रास पत्र 1 अध्याय 20व्या वचनात लिहिण्यात आलेले आहे, त्याच्या रक्ताच्या द्वारे आपले समेट करण्यात आलेले आहे। By Jesus to reconcile all things unto Himself. By Him I say, whether they be things in heaven or things in earth or things in heaven. और जो इस पृथ्वी का है और जो स्वर्ग में, उन सारी बातों के साथ प्रभु यीशु मसीह में हमारा मेल मिलाप करा दिया है। आणि पृथ्वीवरील असो किंवा स्वर्गातील असो, त्या सर्वांबरोबर त्यांनी आपला समेट करून दिलेला आहे। Well, the word of God speaks about the Lord प्रभु Jesus, यीशु मसीह के संबंध में वचन क्या कहता है? आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताविषयी वचन काय सांगते? that He is the one
who was going to, in the spiritual for prophetical fulfillment, we read in Isaiah chapter 22. यशाया किताब के 22वें अध्याय में यीशु मसीह के संबंधित भविष्यवाणी की बातें क्या लिखा हुआ है? आणि जे आहे यशायाचे पुस्तक 22 अध्यायामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताविषयी भविष्यवाणी काय सांगण्यात आलेली आहे? Verse 21, here it says, verse 21, I will clothe him with thy robe. और मैं उसको तेरी पेटी कमर कसूंगा आणि मी तुझा झगा घालीन. The Lord Jesus, when he arose from the dead, और प्रभु यीशु मसीह जब मरे में से जी उठा आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त जेव्हा मृत्यूतून जिवंत झाला, he was clothed with a glorious garment. John the apostle saw that in Revelation chapter 1. और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में यूहन्ना ने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने पुनरुत्थान को प्राप्त किया, प्रभु यीशु मसीह को एक महिमा में वस्त्र दिया है. आणि जे आहे प्रकटीकरणाच्या पहिल्या अध्यायामध्ये पाहू शकतो, योहानाने पाहिलं आहे जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त उठविला गेला आहे तेव्हा पहा गौरवाचे वस्त्र त्याला देण्यात आलेले आहे. That robe is that glorious, the new garment is the glorious body with which Jesus arose. और वो जो नया वस्त्र था वो एक महिमा में तेजो में वस्त्र था जिसको यीशु मसीह ने परिधान किया. आणि जे नवीन वस्त्र होते, जे गौरवयुक्त वस्त्र होते, जे प्रभू येशू ख्रिस्ताने परिधान केले होते. Now the Lord Jesus imparts the garments of salvation and robe of righteousness for those who repent of their sins first of all. और उसी के बाद अभी वर्तमान वही प्रभु यीशु मसीह जो भी कोई अपने पापों से अनुताप करते हुए मन परिवर्तन करता है उसे वो उस उद्धार का वस्त्र और धार्मिकता का वस्त्र देता है. आणि आज वर्तमान मध्ये या वेळेमध्ये जे कोणी आपले पाप पश्चाताप करीतो, कबूल करीतो, पहा परमेश्वर नीतिमत्वाचे आणि तारणाचे वस्त्र देत आहे. Not only you must repent of your sins, confess and forsake them too, and accept him as your Lord and Savior, you will be clothed with the garment of salvation spiritually. हम लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हुए हमारे सारे अधर्मों को हम लोग छोड़ देने से और प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से वो हमें उद्धार के वस्त्र को पहनाएगा. आणि जेव्हा आपण सर्व आपले पाप कबूल करीतो, पश्चाताप करीतो आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला तारणारा म्हणून स्वीकार करीतो, त्यावेळेस परमेश्वर पहा आपल्याला उद्धाराचे वस्त्र, तारणाचे वस्त्र देत आहे. And the robe of righteousness is given for those who obey him. Obeying means obeying his counsel first of all in the truth of water baptism. और धार्मिकता का वस्त्र उनको दिया जाता है जो उसकी बात आज्ञा मानते हैं. आज्ञा मानने का अर्थ है कि जो परमेश्वर की सलाह पानी की बपतिस्मा में मान करके पूरा करते हैं. आणि नीतिमत्वाचे वस्त्र त्यांना देण्यात येते जे कोणी देवाचे आज्ञेचे पालन करीतात. आज्ञेचे पालन करणे म्हणजे काय? म्हणजे पाण्याचा बपतिस्मा घेणे होय. Just for reference, these are written in Isaiah chapter 61 verse 10. आपके ज्ञान के लिए बता दें कि ये सारी बातें उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र के बारे में यशाया 61वां अध्याय वचन 10 में लिखा है. आणि या सर्व गोष्टी विषयी, तारणाचे वस्त्र आणि नीतिमत्वाचे वस्त्राविषयी यशायाचे पुस्तक 61 अध्याय याच्या 10व्या वचनात लिहिण्यात आलेले आहे. Glory be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति होवे. देवाच्या नावास गौरव असो. So God wants to give this experience to all of us. परमेश्वर ये अनुभव हम में से हर एक को देना चाहता है. आणि हे अनुभव आपल्या प्रत्येकांना परमेश्वर देऊ इच्छितो. Those who have repented of your sins, accepting him as your Lord and Savior now, be baptized in water, obeying the counsel of God, be clothed with the robe of righteousness. जो भी कोई अपने पापों को पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है और उसकी दी हुई सलाह पानी के बपतिस्मा में मान लेता है, उसको परमेश्वर धार्मिकता का वस्त्र देता है. आणि जे कोणी पश्चाताप करीत प्रभू येशू ख्रिस्ताला तारणारा म्हणून स्वीकार करीतात आणि देवाचे आज्ञा पालन करीत बपतिस्मा घेतात, पहा अशा लोकांना परमेश्वर नीतिमानाचे वस्त्र देत आहे. So in baptism, there is an aspect of righteousness. We are being partakers. We are being able to become partakers of his obedience. Thereby, we are being clothed with this robe of righteousness. और बपतिस्मा लेने के द्वारा हम उसकी आज्ञा मानने में हम लोग सहभागी होने के कारण ही परमेश्वर हमको ये धर्म का चादर उड़ा देता है. आणि आपण आज्ञा पालन करून त्याच्यामध्ये सहभागी झाल्या कारणास्तव पहा परमेश्वर धार्मिकतेची किंवा नीतिमत्वाची जगाने तो आपल्याला ओढत आहे. According to Romans chapter 5
And verse 19, for by one man's disobedience, Adam, many were made sinners. So by the obedience of one, the Lord Jesus, shall many be made righteous. और जिस प्रकार रोमी की किताब 5 अध्याय 19 वचन में लिखा है, जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने अर्थात यीशु मसीह की आज्ञा मानने के द्वारा बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे. आणि ज्या प्रकारे रोमकरास पत्र 5 अध्यायाच्या 19व्या वचनात लिहिण्यात आलेले आहे, कारण जसे त्या एकाच मनुष्याच्या आज्ञाभंगाने पुष्कळ जण पापी ठरले होते, तसे या एकाच मनुष्याच्या आज्ञा पाळण्याने पुष्कळ जण नीतिमान ठरतील. So there is a doctrine, as you heard even last night, there is a doctrine. The word of God is the truth. और इसी प्रकार हम लोगों ने, जैसे कि कल रात भी हमने सुना कि इसके लिए एक उपदेश है, परमेश्वर का वचन सत्य है. आणि आज काल रात्री ज्या प्रकारे आपण ऐकले की एक उपदेश आहे आणि परमेश्वराचे वचन सत्य आहे. So to be found clothed with the robe of righteousness, that means to be found with that very obedience of Jesus. और उस धार्मिकता के चादर को ओढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह के उसी आज्ञाकारी होकर के दिखाई देने के निमित्त आणि जे आहे ते महत्वाचे जगा ओढण्याकरिता आणि देवाचे आज्ञापालन करणारे होऊन दिसून येण्याकरिता. What is it we must believe of the truth? हम लोग सत्य से क्या विश्वास करना है आणि आपण सर्व कोणत्या गोष्टीवर विश्वास केले पाहिजे. You have your Bibles open with me to Romans chapter 6. आइए, अगर आपके पास धर्मशास्त्र है तो मेरे साथ आप लोग रोमी की किताब 6 अध्याय की ओर खोलो. आणि जर तुमच्याकडे पवित्र शास्त्र असेल तर या माझ्यासोबत तुम्ही रोमकरास पत्र 6 अध्याय उघडा. This is the doctrine, this is the truth. और यही सत्य है, यही वास्तविकता है. आणि हे सत्य आहे, हेच उपदेश आहे. Man who disobeyed in the Garden of Eden, all his generation, including me, this interpreter, and all of us who are born are descendants of that disobedient man. We were born with an inherent nature through that first man. और मनुष्य, According to Psalm 51 verse 5. और आदम के पाप के कारण, और आदम ने जो आज्ञा उल्लंघन का पाप किया है, उसके द्वारा जितने भी मनुष्य जन्म हुए हैं, वो सारे मनुष्य उस दिन से लेकर के पाप में ही जन्म लिए हैं. भले ही वो मैं हूं या मेरे साथ अनुवाद करने वाले ये लोग हैं, वो जितने भी लोग इस संसार में, वो लोग सब लोग इस संसार में आदम के वंशज होने के कारण सब लोग पापी ही हैं, जिसके विषय में भजन संहिता 51 के 5 वचन में लिखा हुआ है. आणि जेव्हा आदम पाप करून पापामध्ये पडला, त्यानंतर त्याचे जितके वंश झाले, जितके त्याच्याद्वारे जन्म घेतलेले आहे, कदाचित तुम्ही असाल, मी असेल, या ठिकाणी भाषांतर करणारे लोक असतील. स्तोत्र संहिता 51 अध्याय याच्या 5व्या वचनाप्रमाणे प्रत्येक जे आहे जन्मतः पापी आहे. To be delivered from this disobedient nature, to partake of the obedient nature. Remember, if man who was first with God in God's kingdom, if we have to come back to that place to be in God's kingdom, हम लोग अगर उससे पहली अवस्था में लौट आने के लिए, क्योंकि हम पहले परमेश्वर के साथ उसके राज्य में थे, अभी हमारे अनाज्ञाकारी स्वभाव से छुटकारा प्राप्त करते हुए, हमारे पाप में जीवन से छुटकारा प्राप्त करते हुए, हमारे उससे पहले परमेश्वर के साथ के रहने वाले जीवन में लौट करके आना है. तो आणि जे आहे आपल्याला त्या आधीच्या सर्वकालिकतेमध्ये यायचे असेल तर आपण जे आज्ञा उल्लंघन करीतो, अवज्ञा करीतो, ते सोडून पापापासून आपण जर यायचे असेल तर, according to Romans chapter 6 verse 4, रोमी की पत्री 6 अध्याय के 4 वचन के आधार पर, रोमकरास पत्र 6 अध्याय 4 वचनानुसार, we need to be buried with Jesus by baptism into death. हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ मृत्यू के बपतिस्मा में उसके साथ गाड़े जाना चाहिए. आपण आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मरणातील बाप्तिस्माने आपण त्याच्या बरोबर पुरले गेले पाहिजे. Romans 6 verse 3, what is this death? For as many as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death. रोमी की किताब 6 अध्याय के 3 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यू का बपतिस्मा लिया. आणि रोमकरास पत्र 6 अध्यायाच्या 3 वचनात पाहतो, जितक्यांनी ख्रिस्त येशूमध्ये बाप्तिस्मा घेतला, तितक्यांनी त्याच्या मरणात बाप्तिस्मा घेतला. याविषयी तुम्ही अजाण आहात काय? What is the meaning of this death? Romans 6:7, for he that is dead is free
freed from sin. और इस मृत्यु का अर्थ क्या है? रोमी की किताब अध्याय 6 वचन 7, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा. आणि हे मृत्यू काय म्हणजे रोमक्रस पत्र 6:7 वचनात पाहतो, कारण जो कोणी मेला तो पापाचा दोषापासून मुक्त होऊन नीतिमान ठरला आहे. So sin came to that disobedience. Sin here is called, in singular tense, is called the sinful nature of disobedience. और जो पाप जो है वो अनाज्ञाकारी से आया. ये पाप जो एक वचन है वो अनाज्ञाकारी के एक स्वभाव के द्वारा हमारे जीवन में ये पाप आ समाया है. आणि हे जे पाप आहे आपल्या जीवनात कसे आले म्हणजे एक अवज्ञाच्या द्वारे, आज्ञाभंग केल्याच्या द्वारे हे पाप आपल्या जीवनामध्ये प्रवेश केले आहे. All these you can find Romans 5 verse 12 onwards. Romans chapter 6 you can see this word sin repeated many times. और ये सारी बातों को रोमी की किताब 5 अध्याय के 12 वचन से आरंभ करते हुए अध्याय 6 तक पढ़ते हुए जाने के समय में उस एक ही पाप को बारंबार दोहराते हुए हम लोग देखने पाते हैं. आणि रोमक्रस पत्र 5 अध्यायाच्या 12व्या वचनापासून ते रोमक्रस पत्र 6व्या अध्यायापर्यंत आपण पाहू शकतो ते पाप जे आहे आपण वारंवार करीत येत आहोत. So when you partake of the truth of baptism, surrendering yourself to obey just as Jesus obeyed the counsel of God and took baptism. और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पिता की सलाह के अनुसार बपतिस्मा लिया, वैसे ही आप भी जब उसकी सलाह को मानते हुए उस बपतिस्मा में यीशु के साथ सहभागी होने के लिए अपने आप को समर्पण करते हो. आणि ज्या प्रकारे आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने पित्याची आज्ञाचे पालन करून बपतिस्मा घेतलेला आहे, तसे तुम्ही त्याचे आज्ञाचे पालन करीत जे आहे बपतिस्मा घेण्यासाठी तुम्ही स्वतः समर्पण करीत आहात. In that experience, you are with Jesus. You are coming to a place to die from that moment onwards to that old disobedient nature of sin. और उस दिन से लेकर के आप आपके अनाज्ञाकारी पुरातन स्वभाव के लिए या पुरातन मनुष्यत्व के लिए आप मर जाते हो और बपतिस्मा के द्वारा आप मसीह यीशु में एक नया जीवन जीने लगते हो. आणि त्या दिवसापासून त्या वेळेपासून तुम्ही सर्व त्या जुन्या अवज्ञा करणाऱ्या स्वभावासाठी आणि तुमच्या सर्व जुन्या स्वभावांसाठी मरण पावता आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत तुम्ही उठविले जाता. That's how you can confess after taking baptism. Romans 6:4, I am dead to that sin or dead to that sinful nature of disobedience. इसी कारण से आप लोग बपतिस्मा लेने के बाद रोमी की किताब 6 अध्याय के 4 वचन के अनुसार आप लोग भी इस बात को मुंह खोल करके स्वीकार करना चाहिए कि मैंने बपतिस्मा लिया है और अभी मैं पाप के उस पुरातन स्वभाव के लिए, मैं पाप के पुरातन मनुष्यत्व के लिए अब मैं मर चुका हूं. आणि जे आहे आपण रोमक्रस पत्र 6:4 4 वचनानुसार बपतिस्मा घेत असताना आपण या प्रकारे कबूल केले पाहिजे की मी माझा जुन्या सर्व स्वभावांकरिता अवज्ञाकरिता मरण पावलो आहे आणि ख्रिस्तासाठी मी जिवंत झालो आहे. Then in the truth of baptism, you are surrendering now your body consciously to God through Jesus Christ. That is, as Jesus did the will of the Father in his body, obeyed all that the Father spoke to him, all that is written in the truth. और जब आप पानी के बपतिस्मा को ले लेते हो, उसके द्वारा आप अपने आप को पिता के हाथ में प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अपने आप को समर्पण करते हो. जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के शास्त्र में लिखे हुए सारे वचनों को पालन करते हुए संसार में जीवन जिया, उसी रीति से एक जीवन जीने के लिए आप अपने आप को पिता के हात में सौंप देते हो. आणि जेव्हा तुम्ही पाण्याचे बपतिस्मा घेता त्यावेळेस तुम्ही स्वतःच पित्याच्या हाती सोपून देता. ज्या प्रकारे प्रभू येशू ख्रिस्त पित्याच्या हाती सोपून देऊन धर्मशास्त्रातील सर्व आज्ञाचे पालन केलेले आहे, तसे तुम्ही देखील पित्याच्या हाती स्वतः सोपून देता. That is what is called in Romans 6:11, you are surrendering yourselves to be alive unto God through Jesus Christ, to do the will of God, to obey all the truth, all what God reveals to you. रोमी की किताब 5-6 अध्याय के 11 वचन को पढ़ने के समय में परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो, अर्थात वर्तमान तो प्रभु यीशु मसीह में जीवित होते हुए पिता के द्वारा कहे गए सारे सत्य वचनों को पालन करने के लिए, उसी के अनुसार जीवन जीने के लिए, चलने के लिए अभी अपने आप को समर्पण करो. यास्तव रोमक्रस पत्र 6:11 वचनानुसार तसे तुम्ही ख्रिस्त येशूमध्ये स्वतः पापाला मेलेले खरे पण देव प्रित्यार्थ जिवंत झालेले असे माना आणि पित्याच्या हाती तुम्ही स्वतः सोपून द्या. And so there you are able to experience one
the nature of sin has no more power over you. तब आप एक बात को He that is dead is freed from sin. तब आप एक बात को अनुभव करोगे कि वो जो पाप का जो स्वभाव आपके जीवन में था, अभी वो आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है. आणि त्यावेळेमध्ये तुम्ही एक गोष्ट अनुभव घेऊ शकाल, जे पापाचे स्वभाव तुमच्या जीवनामध्ये दिसून येत होते, आता ते दिसून येणार नाही. All that came into this world, the lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, is through that first man's disobedience. जितने भी इस संसार में आए और इस संसार के द्वारा जो उनको मिला वो है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड. ये सारी बातें उस एक मनुष्य के द्वारा ये मनुष्य को प्राप्त हुआ. आणि जे कोणी या जगात आले त्यांना जे आहे डोळ्याची वासना, देहाची वासना व संसाराविषयीची फुचारकी, ही सर्व गोष्ट त्यांना लाभली आहे. That's why in water baptism you are dead to the old disobedient nature of sin. Number 2, what comes with that? You are dead to the world, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. It has no more power again to draw you back. और आप जब पानी की बपतिस्मा को लेते हो तो सर्वप्रथम आप पाप के लिए मर गए, दूसरा आप जगत के लिए मर गए, अर्थात आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड को अभी आपके ऊपर कोई प्रभुता नहीं, कोई राज्यत्व नहीं. आणि जेव्हा तुम्ही बपतिस्मा घेता तेव्हा सर्वात प्रथम तुम्ही जे आहे पापाकरिता मरता आणि दुसरे तुम्ही जगाकरिता मरता. जगाकरिता मरणे म्हणजे जे आहे डोळ्याची वासना, देहाची वासना आणि संसाराविषयीची फुसारकी, याचे आता तुमच्या जीवनावर कोणतेही अधिकार नाही. Then we read Romans 6 verse 4. He was raised by the glory of the Father, by the power of the Holy Spirit, after doing the perfect will of God. और रोमी की किताब 1 अध्याय के 4 वचन में जैसे हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस महिमा की आत्मा के द्वारा जी उठा. आणि आपण रोमक्रस पत्र पहिल्या अध्याय 4 वचनात ज्या प्रकारे वाचतो, प्रभू येशू ख्रिस्त त्या गौरवाच्या आत्म्याने तो उठविला गेला. Likewise, you will also be raised spiritually by the power of the Holy Spirit. उसी प्रकार पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आप भी जिलाए जाओगे. आणि पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाच्या द्वारे तुम्ही देखील जिवंत व्हाल. Eliakim also means the resurrection of God, or raised up by God. Eliakim also means the resurrection of God or raised up by God. और उसके समान उठा ले जाने का मतलब परमेश्वर के उसी आत्मा के द्वारा उसी के मानिंद आप लोग भी जिलाए जाओगे आणि उठाए जाओगे. आणि त्याप्रमाणे जिवंत होऊ म्हणजे देवाच्या आत्म्याच्या द्वारे ज्या प्रकारे प्रभू येशू ख्रिस्त पुनरुत्थित झाला आहे तसे तुम्ही देखील उठविले जाल, पुनरुत्थित व्हाल. When you dedicate your body to God, जब अपने जीवन को, अपने शरीर को परमेश्वर के हाथ में आप समर्पण करोगे, जेव्हा तुमच्या जीवनास, तुमच्या प्राणास तुम्ही देवाच्या हाती सोपून द्याल. as it says in Romans 6:11, I am dead indeed to sin, sinful disobedient nature today. मैं मेरे पाप और मेरे पाप के कामों के लिए मैं मर गया. रोमी की किताब 6 के 11 वचन में जैसा लिखा है, आणि मी सर्व माझ्या पापांच्या कार्याकरिता मी मरण पावलो आहे. याबद्दल रोमक्रस पत्र 6 अध्याय 11 वचनामध्ये ज्या प्रकारे लिहिण्यात आलेले आहे, Romans 6:11, but I am alive to do the will of God, just as Jesus Christ did the will of God. अभी मैं पिता की मर्जी करने को तैयार हूं, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पिता की मर्जी को पूरा किया. आणि ज्या प्रकारे प्रभू येशू ख्रिस्त पित्याची इच्छा पूर्ण केलेला आहे. I am dead to sin, I am dead to the world too. मैं इस पाप के लिए, जगत के लिए भी अभी मैं मर गया हूं. आणि मी पापाकरिता जगासाठी मी मरण पावलो आहे. I yield all my members that come under my 5 senses. Romans 6 verse 13. मैं मेरे भी शरीर के सारे 5 इंद्रियों को, मेरे शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों को परमेश्वर की मर्जी के लिए मैं समर्पण करता हूं. आणि रोमक्रस पत्र 6 अध्याय 13व्या वचनानुसार माझ्या सर्व अवयवांना मी जे आहे मारून टाकतो, स्वाधीन करीतो व देवाला मी स्वतःस अर्पण करीतो. Example, Romans 6:13, I yield my eyes now as members that are dead to that sinful disobedient nature, but alive unto God through Jesus Christ, through the will of the Father, रोमी की किताब 6 अध्याय as instruments of righteousness unto God. रोमी की किताब 6 अध्याय के 13 वचन कहने का अर्थ, मैं मेरे शरीर के अंगों को वर्तमान पाप के लिए तो मरा जानते हुए, परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझते हुए, अपनी आंखों को वर्तमान पाप के लिए समर्पण ना करते हुए परमेश्वर की मर्जी करने के लिए अपने आप को समर्पण करता हूं और धार्मिकता की हथियार बनने के लिए
लिए मैं अपने आप को दे देता हूं. आणि रोमकरासपत्र 6:13 वचनानुसार माझे जे काही शरीराचे अवयव आहे ते पापाला मी समर्पण करीत नाही. माझे डोळे मी पापाकरिता समर्पण करीत नाही, परंतु माझे अवयव नीतीचे साधन होण्याकरिता देवाला समर्पण करीतो. As you yield all your members that come under your five senses. और जिस प्रकार Similarly, इसी रीति से जब आप लोग अपने शरीर के सारे 5 इंद्रियों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दोगे, आणि जेव्हा तुमचे सर्व 5 इंद्रिय तुम्ही देवाच्या हाती सोपून द्याल, the nature of sin of disobedience of Adam cannot have dominion, it shall not have dominion over you anymore. Romans 6 verse 14. और उसके बाद ये आदम के द्वारा आए हुए ये पाप के अनाज्ञाकारी स्वभाव को हमारे ऊपर और कोई प्रभुता नहीं, राज्यत्व नहीं. रोमी की किताब 6 अध्याय के 14 वचन के अनुसार. आणि रोमकरासपत्र 6:14 वचनानुसार आदमाकडून जे काही पाप आलेले आहे ते जे आहे आपल्यावर सत्ता चालविणार नाही. And it says you will be no more under the dominion of sin but under the dominion of his grace. Romans 6:14. रोमी की किताब 6 अध्याय के 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, पर व्यवस्था की अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो. आणि रोमकरासपत्र 6:14 वचनात या प्रकारे लिहिण्यात आलेले आहे, पाप तुमच्यावर सत्ता चालविणार नाही, परंतु नियमशास्त्राच्या अधीन व कृपेच्या अधीन तुम्ही आहात. Holy Spirit will fill you with his power to walk in newness of life. और पवित्र आत्मा का शक्ति एक नए जीवन की सी चाल चलने के लिए अपने आपको परिपूर्ण करेगा. आणि ज्या पवित्र आत्म्याचे सामर्थ्य नवीन नियमाप्रमाणे चालण्याकरिता आपणास मदत करेल. Take control. Holy Spirit quickens you with his resurrection life, takes control of your heart, takes control of your mind and brings it under that anointing. और ये पवित्र आत्मा वो आपके मन को, आपकी आत्मा को नियंत्रण करके उस अभिषेक के नियंत्रण में आपको चलाएगा. आणि पवित्र आत्मा सर्वात प्रथम तुमचे अंतःकरण, तुमचे हृदय, तुमचा आत्मा नियंत्रणामध्ये घेईल आणि तुम्हास एका नियमामध्ये चालवेल. And Romans 8 verse 2, coming under the anointing, he delivers you from the law of sin, that sinful disobedient nature. और रोमी की किताब 8 अध्याय के 2 वचन में इस पवित्र आत्मा का अभिषेक में लाने के द्वारा इससे व्यवस्था से आपको छुटकारा मिलेगा. इससे पाप की व्यवस्था से आपको छुटकारा मिलेगा. आणि जे आहे आपण पवित्र आत्म्याच्या स्वाधीन आल्या कारणास्तव रोमकरासपत्र 8 अध्यायाच्या 2 वचनानुसार नियमापासून व पापापासून आपण मुक्त होऊ. Secondly, the Holy Spirit will bring you under that anointing, law of the Spirit of life, which is that anointing. और पवित्र आत्मा And set you free from the law of death. That's the sinful works or actions that bring the death. और पवित्र आत्मा आपको नियंत्रण करने के बाद आपको पाप को और मृत्यु की व्यवस्था से आपको छुड़ाएगा. मृत्यु के से वो पाप के सारे कामों से वो आपको छुटकारा देगा. आणि जे आहे पवित्र आत्म्याच्या स्वाधीन आल्या कारणास्तव पाप आणि मरणाचे नियमापासून मुक्त करेल. आणि मरणाचे नियम म्हणजे पापाच्या सर्व कार्यापासून तुम्हाला तो मुक्त करेल. You can experience this glorious life. और ये महिमा में जीवन को अपने जीवन में आप अनुभव करने पाओगे. आणि त्यावेळेस तुम्ही ते गौरवयुक्त सर्व अनुभव तुमच्या जीवनामध्ये अनुभव घेऊ शकाल. Now your members becomes servants to obedience unto righteousness, to do what is right in God's sight. वर्तमान आपके शरीर के अंग प्रत्यंग धार्मिकता के हथियार होकर के बदल गए हैं. अर्थात जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है वही काम करने के लिए आपका शरीर को आपने समर्पण कर दिया है. आणि तुम्ही तुमचे शरीर जे आहे नीतीचे शस्त्र, नीतीचे साधन होण्याकरिता आणि पूर्ण व्यवस्थित चालीरीत्या करण्याकरिता तुम्ही सोपून दिले आहे. That is written in Romans 6 verse 16. Your members become servants to obedience unto righteousness. रोमी की किताब 6 के 16 वचन में जैसा लिखा है, वर्तमान तुम्हारे शरीर के अंग प्रत्यंग उसके धर्म के हथियार के स्वरूप समर्पण हो गए हैं. आणि रोमकरासपत्र 6:16 वचनानुसार तुमचे सर्व अवयव, तुमचे पूर्ण शरीर जे आहे परिणाम त्याचे नीतिमत्व, त्याचे आज्ञापालन असे झाले आहे. Holy Spirit will take control of your heart and mind and take control of your body too and quicken you. वो पवित्र आत्मा वो आपके हृदय, मन और आपके शरीर को नियंत्रण करके वो आपको जिलाएगा. आणि ते पवित्र आत्मा तुमचे आत्मा, प्राण, शरीर नियंत्रणामध्ये घेऊन तुम्हास तो जिवंत करेल. Thereby, verse 19, Romans 6:19, you can yield your members as you obey God's word, the truth, as servants. Your members will become servants to righteousness unto holiness. और परमेश्वर का वचन 19 वचन में इस प्रकार लिखता है कि अब अपने अंगों को पवित्रता के धर्म के दास करके आप सौंपने पाओगे. आणि आपण रोमकरासपत्र 7:19 वचनात पाहू शकतो, आपले अवयव जे आहे आपण पवित्रीकरणाकरिता नीतिमत्वाला गुलाम असे समर्पण करत आहोत. So
he will be clothed with that robe and the girdle, it says about Eliakim. और एलियाकीम के विषय में लिखा हुआ है कि वो उसको अंगरखा पहनाएगा और उसकी कमर को तेरी पेटी कसकर बांधेगा. आणि त्या एलियाकीम बद्दल जे आहे असे लिहिण्यात आलेले आहे, त्याला तुझा झगा घालीन व त्याला तुझा कमरबंद कशीन. Oh yes, that robe speaks of honor. Another meaning of that word robe speaks of honor. ये अंगरखा बोलने से, एक रीति से देखने से या उसका और एक अर्थ बोलने से आदर को दिखाता है. आणि हे जे कमरबंद आहे एका गोष्टीकडून जे आहे एका अर्थाने हे आपले आदरास दर्शिते. And the girdle also speaks of power and the truth. और ये कमर की पेटी बोलने से शक्ति और सत्य को दिखाता है. आणि हे कमरबंद म्हणजे जे आहे शक्ती सामर्थ्यास दाखविते. So when we obey the truth, obey the gospel, जब हम लोग सुसमाचार के सत्य को विश्वास करेंगे, जेव्हा आपण सुवर्तमानाच्या सत्यावर विश्वास करू, Christ is made unto us the wisdom of God and the power of God. मसीह हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ और ज्ञान होकर के बदल जाएगा. आणि ख्रिस्त आपल्याकरिता ज्ञान व सामर्थ्य होऊन बदलून जाईल. Come back to Isaiah the 22nd chapter. यशाया की किताब उसके 22वें अध्याय में लौट आने से आपण यशायाचे पुस्तक 22 अध्यायाकडे पुन्हा वळून आले असता. Don't forget what you have heard until now. Do not forget what you heard until now. अभी तक आपने जो भी कुछ सुना उसको भूल मत जाना. आणि जे काही आता पण तुम्ही ऐकले आहे ते सर्व काही तुम्ही विसरून जाऊ नका. Now we will see further what is written in verse 21, referring to the Lord Jesus Christ. अभी हम लोग 21 वचन में आगे देखेंगे कि यीशु मसीह के संबंधित यहाँ पर भविष्यवाणी स्वरूप क्या लिखा हुआ है. आणि आपण 21व्या वचनानुसार जे आहे येशू ख्रिस्ताविषयी काय भविष्यवाणी झालेली आहे ते आपण पाहूया. Here it says, I will commit thy government into his hand. और यहाँ पर लिखा है कि मैं प्रभुता उसके हाथ में दूंगा. आणि येथे लिहिण्यात आलेले आहे तुझी सत्ता त्याच्या हाती देईन. So God the Father committed that government eternally into the hands of the Lord Jesus. हमारे पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथ में ये प्रभुता सनातन रीति से परमेश्वर प्रभु के हात में दे दिया है. आणि आपल्या पिता परमेश्वराने ही जी सत्ता आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या हाती सर्वकालिक जीवनासाठी दिली आहे. That is to the church now. Jesus, he is the one over that government. और कलीसिया के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ही प्रभुता करता है. आणि मंडळीवरती प्रभू येशू ख्रिस्त सत्ता गाजवितो. In Isaiah chapter 9, यशाया की किताब उसके अध्याय 9 में, यशायाचे पुस्तक 9 अध्यायामध्ये verse 6 and 7, उसके 6-7 वचन में, आणि त्याचे 6 आणि 7व्या वचनामध्ये, the government shall be upon his shoulder. प्रभुता उसके कंधे पर होगी. आणि सत्ता त्याच्या खांद्यावर राहील. Just Eliakim, that government was put upon the responsibility of that kingdom was put upon Eliakim. और जिस प्रकार एलियाकीम के ऊपर उसके राज्य का बोझ भार दिया गया, आणि ज्या प्रकारे एलियाकीम वरती त्याच्या राजाचे सत्ता त्यावर होती, now Jesus is over this government, over the church. और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह वर्तमान इस प्रभुता के ऊपर, कलीसिया के ऊपर राज्यत्व करता है. आणि वर्तमानामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त ते सत्ता त्या मंडळीवरती तो गाजवित आहे. The word of God says verse 7 of the increase, Isaiah 9:7, of the increase of his government and peace there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. यशाया की किताब अध्याय 9 वचन 7, और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा. इसलिए वो दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा. सेनाओं के यहोवा का धुन के द्वारा ये हो जाएगा. आणि यशायाचे पुस्तक 9 अध्यायाच्या 7व्या वचनात या प्रकारे लिहिण्यात आलेले आहे, त्याच्या सत्तावृद्धीला व शांतीला अंत नसणार. तो दाविदाच्या सिंहासनावर बसून त्याचे साम्राज्य चालविल आणि तेथून पुढे तो सर्व काळ न्यायाने व धर्माने दृढ व स्थिर करील. सेनाधीश परमेश्वराचा आवेश हे सिद्धीस नेईल.
होईल. Isaiah 22:21, and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. और यशायाह की किताब के 22वें अध्याय के 21 वचन में लिखा हुआ है, वह यरूशलेम के रहने और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा. आणि यशायाचे पुस्तक 22 अध्याय 21व्या वचनात लिहिण्यात आलेले आहे, तो यरूशलेम कराचा व यहूद्यांच्या घराण्याचा पिता होईल. Judah speaks of those of the household of faith. Jerusalem speaks of all the believers, और यहूदा the बोलने spirit baptized believers. यहूदा बोलने का मतलब वो जो परमेश्वर के विश्वास भवन में रहते हैं, और यरूशलेम बोलने का मतलब सारे विश्वासियों को दिखाता है. आणि यहूदा म्हणजे विश्वासास दर्शविते आणि यरूशलेम म्हणजे बाप्तिस्मा घेतलेल्या सर्व विश्वासणाऱ्यांना दर्शविते. Here it says in verse 21 that he will, verse 22, the key of the house of David will I lay upon his shoulder. 22 वचन में लिखा है कि मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा. आणि 22व्या वचनात लिहिण्यात आलेले आहे, दाविदाच्या घराण्याची किल्ली त्याच्या खांद्यावर ठेवीन. What is this? और ये कुंजी क्या है? आता हे किल्ली काय आहे? Revelation, the 3rd chapter. प्रकाशित वाक्य अध्याय 3. प्रकटीकरणाचे पुस्तक 3रे अध्याय. Here it says in verse 7, oh, to the angel of the church of Philadelphia write, these things said he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय के 7 वचन में, और फिलदेल्फिया के कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है. आणि प्रकटीकरणाचे पुस्तक 3रे अध्याय 7व्या वचनात फिलोदेफिया येथील मंडळीच्या दूताला लिही, जो पवित्र व सत्य आहे, ज्याच्या जवळ दाविदाची किल्ली आहे, ज्याने उघडल्यावर कोणी बंद करणार नाही आणि ज्याने बंद केल्यावर कोणी उघडणार नाही, तो असे म्हणतो. This speaks about the Lord Jesus when he died and rose again. That key, all power in heaven and earth was given to the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठने के द्वारा सारे स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आ गया. आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त मरण पावून जिवंत झाल्यानंतर जे आहे, सर्व स्वर्गाचे व अधोलोकाची किल्ल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे आल्या आहे. It's a shadow earlier, the robe speaks of honor, girdle speaks of power and the truth. When Jesus humbled himself even to the death and became obedient even to the death of the cross, God the Father honored him. और ये जो अंग रखा है वो उसके आदर को दिखाता है, और ये कमर की पेटी जो है वो उसके शक्ति और उसके सामर्थ को दिखाता है. और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने आप को नम्र किया, अपने आप को ऐसा नम्र किया कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, उस समय में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने आदर किया है. आणि जे आहे हे जी जगा आहे हे आदर मानास दर्शविते, आणि जे कमरबंद आहे हे आनंदास दर्शविते. प्रभू येशू ख्रिस्त मरणाचे दुःख सोसेपर्यंत जे आहे स्वतःच नम्र केलेला आहे, आणि तो लीन होऊन वधस्तंभावर खिळला गेलेला आहे, ज्याच्याद्वारे पित्याने त्यास आदर दिलेला आहे, मान दिलेला आहे. That name was despised, that name was hated, his own disciples at the end forsook him, and that name was a rejected name वो नाम जो लोगों के द्वारा रद्द किया गया, by man. वो नाम लोगों के द्वारा रद्द किया गया, लोगों ने उसको परित्याग कर दिया, लोगों ने उसे तुच्छ जाना, अपने ने उसे छोड़ दिया. आणि ते नाम जे मनुष्याने पूर्ण मानव जातीने जे धिक्कारले, त्यास ते तुच्छ लेखिले. Finally, because he pleased the Father, John 8:29, I always do those things that please my Father. किंतु अंत में जिस प्रकार यूहन्ना की किताब 8:29 में लिखा हुआ है, मैंने सर्वदा वही काम किया जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है. और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने पिता को अंत में प्रसन्न करते हुए, आणि जे आहे योहान सुवर्तमान 8 अध्यायाचे 29व्या वचनात जे आहे, सदैव पिता म्हणत आहे, मी तेच केले जे पित्यास सर्वदा आवडते, आणि जे आहे या गोष्टी करून प्रभू येशू ख्रिस्त पित्यास जे आहे प्रसन्नाचे जीवन जगलेला आहे. According to Philippians chapter 2
from verse 7 to 9, 7 to 11, he humbled himself, became obedient to the death of the cross. और फिलिप की किताब दूसरे अध्याय 7 से लेकर के 11 वचन तक उसने अपने आप को शून्य कर दिया, दास का रूप धारण किया. आणि हे फिलिपिकरास पत्र दुसऱ्या अध्याय 7व्या वचनापासून पुढे आपण पाहू शकतो प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतःच रिक्त केले व दासाचे स्वरूप धारण केले. Therefore, verse 9, God the Father has highly exalted him, honored him. इसी कारण से 9 वचन में लिखा हुआ है कि पिता परमेश्वर उसका नाम अति महान बनाया, ऊंचा कर दिया. आणि 9व्या वचनात पाहतो यामुळे देवाने त्याला तुच्छ केले आणि सर्व नावापेक्षा श्रेष्ठ असे नाव At the दिले. name of Jesus, every knee should bow of things in heaven, the angels, things on earth, all on the earth, things under the earth, all the demons then will confess Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. अभी ये नाम जो सारे नामों से श्रेष्ठ है कि जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे का नरक है, वो सारे नाम यीशु के नाम के सामने घुटना टेकेंगे. आणि पृथ्वी आणि स्वर्गात आणि नरकात सर्व जे आहे या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाखाली गुडघे टेकतात आणि देवपित्याचे गौरव करतात आणि म्हणतात प्रभू येशू ख्रिस्त तो प्रभू आहे. Yes, when Jesus arose from the dead, जब अभी यीशु मसीह मरे में से जी उठा, जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त मरणामृत्यूतून जिवंत झाला. oh, forever and ever, he is having all power in heaven and earth. All the demons also, it's far above all human authority and far above all the demons. The demons have been utterly destroyed under his feet. Ephesians chapter 1, verse 19 to 22. और जब अभी यीशु मसीह मरे में से जी उठा, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को सारे पृथ्वी और सारे प्रधानताएं, प्रभुताएं, सिंहासन, अधिकार, सारे शैतानी शक्तियों, सारे नामों से भी एक श्रेष्ठ नाम उसको दिया गया. आणि ज्या प्रभू येशू ख्रिस्त मृत्यूतून जिवंत झाल्या कारणास्तव सर्व अधिकार, सर्व राजासन आणि सर्व शैतान शक्ती त्याहून उंच एक नाव देण्यात आले. Yes, today let us believe in this greatest name. आइए आज इस सुबह के वक्त में इस महान नाम को हम विश्वास करें. या सकाळच्या वेळेमध्ये या श्रेष्ठ नावावरती आपण विश्वास ठेवूया. As we do the will of God, जब हम परमेश्वर की मर्जी को करेंगे, जेव्हा आपण परमेश्वराची इच्छा पूर्ण करू, He will open all the doors that are shut. No man can shut it if He will open the door. अगर वो हमारे साथ होगा, हमारे लिए वो ऐसा द्वार खोलेगा कि कोई भी व्यक्ति उस द्वार को दोबारा बंद नहीं कर सकेगा. परमेश्वर आपल्या पक्षाने होईल आणि जेव्हा परमेश्वर आपल्या करिता द्वार उघडेल त्यावेळेस कोणी बंद करू शकणार नाही. At the same time, He has all power in heaven and earth. When it is not His will, He will shut the door. No man can open it. वही उसी समय में हमारा परमेश्वर जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जिसके हाथ में स्वर्ग पृथ्वी की कुंजी दिया गया है, जो उसकी मर्जी नहीं करेंगे उसके लिए वो अगर द्वार बंद करेगा तो कोई उसे खोल नहीं सकेगा. आणि त्याच वेळेमध्ये जे कोणी परमेश्वराची इच्छा पूर्ण करत नाही, ज्याच्या हातामध्ये स्वर्ग आणि पृथ्वीचे किल्ले आहे, जेव्हा परमेश्वर बंद करेल त्यावेळेस ते कोणी उघडू शकणार नाही. Now we see one thing more. I will fasten him as a nail in a sure place. और उसके विषय में और एक बात हम लोग देखने पाते हैं कि मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी की नाई गाडूंगा. आणि त्याविषयी आणखी एक गोष्ट पाहू शकतो, मजबूत ठिकाणाच्या खुंटीसारखे मी त्याला स्थिर करेन. The nail is the Lord Jesus Christ. और ये खूंटिया प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है. आणि जी खुंटी आहे आपला प्रभू येशू ख्रिस्त यास दर्शविते. And he's fastened as a nail in a sure place. और वो एक दृढ़ स्थान पे, एक निश्चित स्थान में उसको गाड़ा जाएगा. आणि एका मजबूत आणि स्थिर स्थानामध्ये त्या खुंटीला जे आहे ठोकले जाईल. Now talking about the kingdom of God, that sure place is Zion and New Jerusalem. परमेश्वर के राज्य के संबंध में वो स्थान स्वरूप देखने से वो स्थान नया यरूशलेम और सियोन है. आणि स्वर्गीय स्थानाविषयी ते पाहिले असता ते स्थान सियोन यरूशलेम आहे. There
That is what in another verse it says in Isaiah 28 verse 16. यशायाह की किताब 28वें अध्याय के 16 वचन में इस प्रकार लिखा है। यशायाचे पुस्तक 28 अध्याय 16 वचनामध्ये या प्रकारे लिहिण्यात आलेले आहे, He is that nail, the precious cornerstone laid in Zion. वो खूंटी है जो देखो बहुमूल्य पत्थर होकर के सिय्योन में रखा गया। आणि पहा ती जी खुंटी आहे ती मौल्यवान कोनशिला आहे, ते सियोनात ठेवण्यात आलेले आहे. He said in John chapter 14 verse 2 and 3, when he has prepared that place, he will come again and receive us to that place. यूहन्ना की सुसमाचार के 14 अध्याय के 3 वचन में इसी यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि जो ये नींव का पत्थर उसने वापस जाकर के रखा है, वो स्थान को प्रस्तुत करने के बाद जहां पर वो रहता है वहां पर ले जाने के लिए वो दोबारा आएगा। यास्तव प्रभू येशू ख्रिस्त योहान सुवर्तमान 14 अध्याय 3 वचनात म्हणत आहे, जे कोनशिला परमेश्वर बचवित आहे, जी जागा परमेश्वर तयार करत आहे, ती जागा तयार केल्यानंतर तो पुन्हा येईल. So now if we have to be in that place, अगर हमको उसके साथ उस स्थान में अगर होना है तो, आणि आपण त्याच्या सोबत त्या स्थानी राहायचे असेल तर we too need to come to the place of honor and also have his power in our lives. हम लोग को भी उसी के उस आदर और उस शक्ति और सामर्थ को अपने जीवन में पाना है। आपण देखील त्याचे ते आदर आणि ते शक्ती सामर्थ्य आपल्या जीवनात प्राप्त करावे लागेल. John chapter 12 verse 25 and 26 says how we can come to the place of honor. यूहन्ना की सुसमाचार 12 अध्याय के 25-26 वचन में कैसे हम उस आदर के पद में आ सकते करके लिखा है। आणि योहान सुवर्तमान 12 अध्याय 25 आणि 26व्या वचनामध्ये कशा प्रकारे आपण ते आदर प्राप्त करू शकतो याविषयी लिहिण्यात आलेले आहे. Because John 14 verse 2 and 3 verse 3, he says, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare it, when I have prepared it, I will come again and receive you unto myself, that where I am, you may be also. यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय उसके 2 और 3 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुम्हें कह देता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने को जाता हूं। यदि मैं जाकर के तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूं तो फिर आकर के तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। योहान सुवर्तमान 14 अध्यायाचे 2-3 वचनात या प्रकारे लिहिण्यात आलेले आहे, माझ्या पित्याच्या घरात राहण्याच्या पुष्कळ जागा आहेत, नसत्या तर मी तुम्हाला तसे सांगितले असते. मी तुम्हासाठी जागा तयार कराव्यास जातो, आणि मी जाऊन तुम्हासाठी जागा तयार केली म्हणजे पुन्हा येऊन तुम्हाला आपल्या जवळ घेईन, यासाठी की जेथे मी आहे तेथे तुम्ही असावे. So we have to be those, according to John chapter 12 verse 24 to 26, be like a corn of wheat ready to fall into the ground and die. अगर हमको उसके साथ उसी स्थान में रहना है तो यूहन्ना की सुसमाचार के 12 अध्याय 24 से लेकर के 26 वचन में जिस प्रकार लिखा हुआ है, हम उस गेहूं के दाने के समान होना चाहिए जो मरने के लिए तैयार हो. आणि आपण ज्या योहान सुवर्तमान 12 अध्यायाचे 25व्या वचनापासून वाचतो, आपण जे आहे त्याच्या आपले प्राण मुकण्याकरिता आपण स्वतःचा द्वेष केला पाहिजे, जीवाचा द्वेष केला पाहिजे. Have a mind to go through that suffering in the flesh, to give up all our physical comforts. हमारे शरीर के सारे सुख सुविधा को परित्याग करके प्रभु यीशु मसीह के खातिर, प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख उठाने वाली एक मनसा हम धारण करना चाहिए. आणि आपले सर्व सुखविलास, सर्व जे काही आधुनिक गोष्टी आहे याचा त्याग करून जे आहे आपण ख्रिस्ताबरोबर दुःख सोसण्याकरिता आपण प्रयत्न केले पाहिजे. Be willing also to be willing to go through any reproach for the sake of Christ, for the name of Jesus, for the truth's sake. प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर, सत्य के खातिर, प्रभु यीशु मसीह के खातिर नहीं, नाना प्रकार के निंदा और अपमान में जाने के लिए भी हम लोग प्रस्तुत रहना चाहिए. आणि जे आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाकरिता, देवाच्या नावाकरिता आपण सर्व निंदा अपमानामधून जाण्याकरिता सिद्ध असावे. That is mentioned in Matthew chapter 16 verse 24 to 26. मत्ती की सुसमाचार 16 अध्याय 16 verse 24 to 26. 16 अध्याय 24 से लेकर के 26 वचन में जैसा लिखा है, आणि मत्ती सुवर्तमान 16 अध्याय 24 वचनापासून ते 26 वचनापर्यंत या प्रकारे लिहिण्यात आलेले आहे. Be willing for the sake of Jesus' name to go to the shame, but what is going to come after this?
eternal honor forever and ever from the triune God. अगर हम परमेश्वर In the मसीह के eternal kingdom of God forever and ever. अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर इस प्रकार के निंदा, दुख और अपमान और क्लेश के रास्ते में जाने के लिए यदि अपने आप को हम लोग समर्पण करेंगे तो हमें बाद में क्या मिलेगा? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तृतीय परमेश्वर की ओर से सनातन राज्य में एक महिमा में स्थान हमें प्राप्त होगा. आणि आपण देवाच्या नावाच्या निमित्त जेव्हा आपण निंदा, अपमान, कष्ट, दुःखाच्या मार्गातून जाऊ त्यावेळेस आपल्याला काय प्राप्त होईल? म्हणजे पिता, पुत्र, पवित्र आत्माच्या नावाच्या द्वारे आपल्याला जे आहे एक गौरवयुक्त चांगले स्थान मिळेल. Be willing to go. John chapter 12:24 that speaks of his physical sufferings. Warm out how much he suffered in doing the will of God, even physically. Be willing to go through that discomfort and the sufferings in the flesh. Arm yourself with the mind to suffer in the flesh like Christ. और यीशु मसीह 12 के 24 वचन में जिस प्रकार में हम देखने पाते हैं कि वो अपने आप को शरीर में दुख उठाने के लिए समर्पण किया, वैसे ही हम लोग भी अपने आप को मसीह के साथ दुख उठाने के लिए अपने आप को समर्पण करें. 12 ते 24 वचनानुसार ज्या प्रकारे आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या प्रकारे दुःख सोसण्याकरिता स्वतः सोपून दिले आहे, तसे आपण देखील सर्व काही सोसण्याकरिता स्वतःच आपण सोपून दिले पाहिजे. Man's self, human nature, loves this body and wants it to have a lot of comfort. It doesn't want any discomfort. That's the human nature in man. मनुष्य के अंदर मानसिक स्वभाव यह है कि वो एक शरीर में सुख सुविधा और आराम को वो चाहता है. एक मनुष्य कदापि नहीं चाहता कि वो अपने शरीर में कष्ट, दुख और यातनाओं को पाए. आणि मनुष्याचे हे स्वभाव आहे की तो कधीही सुखविलास सोडू इच्छित नाही, आधुनिक गोष्टी सोडू इच्छित नाही आणि आपल्या जीवनामध्ये, आपल्या शरीरामध्ये कष्ट, दुःख तो सोसू इच्छित नाही. So Jesus taught. He hated his life, hated that there was no self in him. He hated his life. We have to hate that human nature, that self in us. और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह कहा कि जो अपने जीवन को घृणा करता है उसके अंदर खुद ही नहीं, उसी प्रकार अपने आप को इस जीवन को घृणा करना चाहिए, तभी उसको परमेश्वर जीवन देगा, अनंत जीवन देगा. आणि यास्तव प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणत आहे, जो कोणी आपल्या जीवास मुखेल त्याला जे आहे परमेश्वर ते सर्वकालिक जीवन देत आहे. Then how can you hate it? Only if the love of Jesus, remembering how he suffered and died on the cross to give you eternal life, only if you remember that love of God can constrain you. हम लोग कैसे अपने जीवन को घृणा कर सकते हैं? हमारे जीवन को घृणा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको प्रेम करते हुए अपने शरीर में कितना दुख और कष्ट को उठाया, उस यीशु मसीह के कष्ट को स्मरण करने से हम अपने आप को घृणा करने पाएंगे. आणि आपण आपल्या शरीराचे कशा प्रकारे घृणा करू शकतो, म्हणजे तिरस्कार करू शकतो, म्हणजे जेव्हा आपण आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताविषयी मनन करू, आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर कशा प्रकारचे दुःख सोसलेलं आहे याची आपण आठवण करू, त्यावेळेस आपल्या जीवाचा आपण तिरस्कार करू शकणार. Now there's a special reference in verse 26 for some who are seated here. और वर्तमान एक विशेष वचन जो यहाँ पर खास तौर से यहाँ पर बैठे हुए हैं. आणि एक विशेष प्रकाशन या ठिकाणी बसलेल्या लोकांना मी देऊ इच्छितो. If any man will serve me, let him follow me. 26 वचन की यदि कोई मेरी सेवा करे तो वो मेरे पीछे हो ले. आणि 26व्या वचनात लिहिण्यात आलेले आहे, जो कोणी माझी सेवा करू इच्छितो त्याने माझ्या मागे यावे. Are you constrained by the love of Jesus to hate your life, hating that name and fame and all that, to love Jesus above everything क्या else? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपको अपने आप को घृणा करके प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने के लिए विवश करता है? आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची जी प्रीती आहे तुमच्या जीवाचा तिरस्कार करून परमेश्वराची प्रेम करण्यासाठी तुम्हाला मदत करीते. Have you forgotten the love of Calvary, or are you freshly being filled with that love as you remember that sacrifice that gave you eternal life there on the cross? क्या आपने प्रभु के प्रेम को भूल गए, या फिर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो कलवरी क्रूस में आपको जीवन दिया, आप उसको ताजा या तरोताज की रीति से आप उसको स्मरण रखते हो? आणि तुम्ही ख्रिस्ताची प्रीती विसरले आहात काय? वधस्तंभावर प्रभू येशू ख्रिस्त तुमच्यावर प्रेम करून काय दुःख सहन केले हे तुम्ही आज नवीन करून घ्या. And you will say, Lord, I will follow you for love's sake. अगर आप Not because of anything I'm going to get. There's nothing I'm going to get in this world. अगर आप प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के उससे प्रेम को स्मरण करते हो और अपने जीवन में उसको ताजा बनाए रखोगे,
तो अन्य किसी बातों को ना देखते हुए केवल प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखते हुए आप भी ये बोलोगे कि हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा। आणि जेव्हा तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्तावर प्रेम कराल आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने माझ्या समोर जे दुःख सोसले त्या गोष्टीस तुम्ही नवीन कराल, त्यावेळेस तुम्ही सांगू शकाल हे प्रभू मी तुझ्या मागे चालेन, इतर गोष्टीकडे तुम्ही लक्ष देणार नाही। As you looked at the Father, endured the cross, despised the shame, and finally gave your life to die, suffer and die on the cross. और लज्जा की कोई भी परवाह किए बगैर जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस कलवरी क्रूस के लिए समर्पण कर दिया आणि लज्जा तुच्छ मानून प्रभू येशू ख्रिस्ताने माझ्या स्तंभावर आपला स्वतःस अर्पण केले। I too am surrendering my life, Lord. हे प्रभु, I will look unto you, Lord. हे प्रभु मैं भी अपने आप को तेरे लिए समर्पण करता हूँ, मैं केवल तेरी ओर ही ताकता निहारता रहता हूँ। हे प्रभू मी आपल्या स्वतःस तुझ्यासाठी समर्पण करीतो, हे प्रभू मी सदैव तुझ्याकडे पाहत I am राहतो। surrendering my life to be your bond servant till the end, Lord. हे परमेश्वर मैं तेरे लिए जीवन सारा बंदी दास बना रहना चाहता हूँ। हे प्रभू मी पूर्ण आयुष्यभर तुझा गुलाम तुझा दास बनू इच्छितो। You won't have any honor in this world, but the Father will honor you इस eternally. संसार में आपके लिए बहुत सारे आदर हो या ना हो, लेकिन स्वर्गीय पिता नित्य में आपको बहुत आयत का आदर देगा। आणि या जगामध्ये तुमचे मान आदर असेल, परंतु पहा स्वर्गीय पिता तुम्हा सर्वकालिकतेमध्ये आदर देईल। Isaiah 21. यशाया किताब 21वां अध्याय एशियाचे पुस्तक 21 अध्याय। In verse 21 we read, He shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. Father here means three things. और यहाँ पर वो लिखा है कि यरूशलेम और यहूदा के लिए वो तुम्हें अपना पिता बनाएगा। इस पिता बोलने से यहाँ पर 3 प्रकार की बातें हैं। आणि जे आहे तो यरूशलेम करास व यहूद्यांच्या घराण्याचा पिता होईल। He will counsel us. पिता कहने से सबसे पहले वो आपको सलाह देगा। आणि पिता म्हणजे सर्वात प्रथम तो तुम्हास बोध देईल। He says He will guide us with His counsel and receive us up to glory. Psalm 73 and in verse 24. भजन संगीता 73 के उसके 24 वचन में वो तुमको सलाह दे करके उसको महिमा में वो चलाएगा। आणि 73वे स्तोत्र याच्या 24व्या वचनात आपण पाहू शकतो तो तुम्हास जे आहे गौरव देऊन त्याच्या मार्गाने तो तुम्हास चालवेल। He will be a father. He will befriend the house of Jerusalem and the house of Judah. और वो तुम्हारा The inhabitants of Jerusalem and the house of Judah. वो केवल तुम्हारे लिए पिता ही नहीं, वो तुम्हारे लिए एक मित्र होकर के यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों के लिए वो ठहरेगा। आणि तो तुमचा फक्त पिता राहणार नाही, तो तुमचा मित्र राहील आणि यरूशलेम यहूदियांसाठी देखील तो मित्र राहील। John 15 verse 15, He revealed all the mysteries to His dear apostles. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 के 15 वचन में पढ़ने के समय में वो अपने प्रिय प्रेरितों को अपनी सारी भेद की बातें प्रकट करता है। आणि योहान शुभवर्तमान 15 अध्यायाच्या 15व्या वचनामध्ये त्याच्या प्रेषित त्याच्या मित्रांना सर्व रहस्य तो प्रकट करून देत All आहे। the hidden truths so that we can grow in Christ and become perfect like Christ and be in the eternal kingdom of God. He will reveal it to us. वो सारे परमेश्वर के वचन की भेद की बातें में प्रकट करके देगा ताकि उस भेद की बातों को जानते हुए हम लोग मसीह की उसी पहचान की डील डोलता में और उसके अनुग्रह में हम लोग बढ़ते चले जाएं। आणि परमेश्वर त्याच्या वचनाचे रस या कारणास्तव प्रकट करून देत आहे की आपण त्याच्या सिद्धतेमध्ये त्याच्या परिपूर्णतेमध्ये आपण यावे। That's why He gave the commission to His apostles after saying, all power is given to me in heaven and earth. Matthew 28 verse 18. इसी के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 18 में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखो स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मेरे को दिया गया है। आणि मत्ती शुभवर्तमान 28 अध्यायाच्या 18व्या वचनात लिहिण्यात आलेले आहे, पहा स्वर्ग व पृथ्वीचे सर्व अधिकार मला देण्यात आलेले आहे। Go make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit, and teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Matthew 28 verse 19 and 20. मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के 19 और 20 वचन, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। मत्ती शुभवर्तमान 28 अध्याय 19-20 वचनात लिहिण्यात आलेले आहे, तेव्हा तुम्ही जाऊन सर्व राष्ट्रातील लोकांस शिष्य करा, त्यास पित्या व पुत्राच्या व पवित्र आत्म्याच्या नावाने बपतिस्मा द्या, जे काही मी तुम्हास आज्ञा दिली ते सर्व पाळावे शिकवा, आणि पहा युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी सर्व दिवस तुमच्या बरोबर आहे। Yes, children of God, be steadfast in this fellowship of the apostles and with the servants of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के सेवकों, प्रेरितों के साथ आप स्थिर बने रहो,
एक दृढ सहभागिता में स्थिर रहो. आणि प्रिय लोकांनो, तुम्ही देवाच्या प्रेषितांसोबत संतगणांसोबत स्थिरतेमध्ये राहा. Finally, he'll be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. He will defend them. और आखिर में वो उसके लिए वो उसका He will defend them. He will be a father, verse 21. He will be a father to the inhabitants of Jerusalem and house of Judah. Isaiah 22, verse 21. He'll be a father to the inhabitants of Jerusalem, verse 21. To the house of inhabitants of Jerusalem, to the house of Judah. Isaiah 22, 21. और यरूशलेम के रहने वाले यहूदा के घराने के लिए वो पिता ठहरेगा. आणि जे आहे यरूशलेम आणि यहुदियांकरिता तो पिता होईल. एशियाचे पुस्तक 22 अध्याय 21 वचन. Isaiah 22, chapter 22, verse 21. यशाया किताब 22 अध्याय के 21 वचन में. एशियाचे पुस्तक 22 अध्याय 23 वचन. Third meaning of being a father to the inhabitants of Jerusalem and the house of Judah. और यहूदा और यरूशलेम के निमित्त वो पिता ठहरने का तीसरा मीनिंग. आणि जे आहे तो यरूशलेम व यहुदियांकरिता जे आहे पिता होईल एवढेच नव्हे तर He will defend them. और वो उसकी सुरक्षा करेगा. आणि तो त्यांची सुरक्षा देखील करेल. This is what you read in Isaiah 31 verse 4 and 5. यशाया किताब 31वें अध्याय के 4 और 5 वचन में हम इस बात को पढ़ने पाते हैं. आणि एशियाचे पुस्तक 31 अध्याय 4 आणि 5 वचनामध्ये याविषयी आपण वाचू शकतो. Yesterday our pastor was saying those who are writing things against his doctrine of Zion and other things. Yes, that's what is written here, verse 4 and 5. और कई लोग जो सिय्योन की व्यवस्था और उसके उपदेश के विरोध में उठते हैं, यही बात हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं. आणि जे लोक सियोनाच्या उपदेशाच्या विरोधामध्ये उठतात त्याचे कारण हे आहे असे आपण पाहतो. Like a lion roaring on his prey. और जिस प्रकार जवान सिंह गरजता है, आणि ज्या प्रकारे एक तरुण सिंह जे आहे गरजतो, He will defend these truths. वो सच्चाई के लिए उसको उसकी रक्षा करेगा. आणि सत्याकरिता तो त्याचे रक्षण And करेल. he'll defend the church of God who are living for these truths. और जो कलीसिया Both the सच्चाई servants के लिए of जीवन God, जीते, both the servants of God Zion and the church of God Jerusalem. और जो सच्चाई के लिए जीवन जीते हैं, वो सिय्योन यरूशलेम के लिए वो उसकी सुरक्षा बनेगा. आणि जे सत्याकरिता जीवन जगतात ते सियोन यरूशलेमकरिता तो त्यांची सुरक्षा होईल. You must contend for that faith. Jude verse 3. यहूदा की पत्री 3 वचन में जैसा लिखा हुआ है, तुम उस सौंपे गए उस एक विश्वास के लिए पूरा यत्न करना चाहिए. आणि यहूदाचे पुस्तक 3 वचनामध्ये ज्या प्रकारे लिहिण्यात आलेले आहे त्याकरिता तुम्ही पूर्ण प्रयत्न करा. Isaiah 31 verse 4. Though many things will rise. Oh, it says that the lion, the father, the young lion, the Lord Jesus, he is roaring on his prey for the truths and for those who are holding fast to the truths for us. कई लोग हमारे विरोध में उठेंगे, कई प्रकार की बातें हमारे विरोध में आएंगे, तो भी एक सिंह की नाई जो पिता परमेश्वर को दिखाता है, एक जवान सिंह की नाई जो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, सिय्योन यरूशलेम के सत्य के लिए खड़े होने वालों के लिए वो एक सुरक्षा होकर के दिखाई देगा. आणि जे लोक या आपल्या विरोधामध्ये उठतात, एक सिंह जे आहे पिताप्रमाणे आणि तरुण सिंह पुत्राप्रमाणे, पुत्र परमेश्वराप्रमाणे जे आहे सत्यासाठी उभा राहणाऱ्या लोकांची तो रक्षण करेल. Verse 4. If you hold on to it steadfast, surrender yourself to God, He, the Lord of hosts, will come down to fight for Mount Zion and for the hill thereof. अगर तुम लोग को जो सौंपा गया उसको पकड़े रहोगे और दृढ़ बने रहोगे, तो सिय्योन यरूशलेम से परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ने को उतरेगा. आणि जे काही तुम्हास देण्यात आलेले आहे त्याचे तुम्ही स्थिर असे बचाव कराल तर पहा परमेश्वर सियोन यरूशलेमेतून तुमचे रक्षण Verse करेल. 5. As birds flying, so will the Lord of hosts defend Jerusalem. Defending also he will deliver it, and passing over he will preserve it. 5 वचन में लिखा हुआ है, पंख फैलाए हुए चिड़िया की नई सेना का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा. 5व्या वचनात लिहिण्यात आलेले आहे, पक्षी जसे पाखर घालितात तसा सेनाधीश परमेश्वर यरूशलेमेचे रक्षण करेल. Finally, Isaiah 22 and verse 23. He shall be for a glorious throne to his father's house. और आखिरी में लिखा है कि वो अपने पिता के घर आने के लिए विभव का कारण बनेगा. आणि शेवटी जे आहे यशायाचे पुस्तक 22 अध्याय 23 वचनात लिहिण्यात आलेले आहे, आपल्या पित्याच्या
घराण्यास वैभवशाली आसन होईल. Here he overcame all things, is seated with his father on his throne. Revelation 3:21. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 21 वचन में वो सारी बातों के ऊपर जय पाकर के पिता के सिंहासन में जा बैठा. आणि प्रकटीकरणाचे पुस्तक 3 अध्याय 3 वचनानुसार सर्व गोष्टींवर जय प्राप्त करून तो पित्याच्या उजवीकडे बसला आहे. If you live this life, you shall also, he will make you an overcomer. अगर आप उसी के पकारे के जीवन को जियोगे तो आप भी एक जयवंत होकर के उसके साथ सिंहासन में बैठोगे. आणि त्या प्रकारे तुम्ही जीवन जगाल तर पहा तुम्ही देखील त्यासोबत जय प्राप्त करून त्याच्या राजासनावर बसाल. You shall be seated with him on the throne and reign forevermore. आप उसके साथ सिंहासन में होगे और सदा काल उसके साथ राज्यत्व करोगे. आणि तुम्ही त्याच्या राजासनावर बसून सदा सर्व काळ त्यासोबत राज्य कराल. Now, this is the time to experience it. अभी समय आ गया कि इन सारी बातों को हम लोग अनुभव करें. आणि आता वेळ आली आहे या सर्व गोष्टीचे अनुभव आपण घेऊया. You may all stand now. आइए हम सब खड़े हो जाएं. या आपण सर्व उठून उभे राहूया. Now we are going to claim what the Lord has spoken to us. प्रभु ने जो हमसे बातें की अब हम उसको दाबी करेंगे. आता जे काही परमेश्वर आपल्या सोबत बोललेलं आहे आता ते We are आपण going कबूल to करूया. pray. We are going to pray. हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे. यासाठी आपण प्रार्थना करूया. You're going to receive an anointing from और God. परमेश्वर के अभिषेक से आप पाएंगे. आणि आपण देवाचे अभिषेक प्राप्त करूया. Oh, he is the one doing this glorious work. वही है जो हमारे जीवन में महिमा में काम कर रहा है. आणि तोच परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये गौरवयुक्त काम He is करत आहे. clothing you with the garments of salvation, robe of righteousness. वो हमें उद्धार के वस्त्र और धार्मिकता के चादर को पहनाता है. आणि तो आपल्याला धारण देतो आणि नीतिमत्वाचे वस्त्र तो परिधान करीवितो. Giving you that girdle, the truth and that power. वो आपको सत्य और शक्ति के वो कमर कसने को देता है. आणि तो सत्य व शक्तीचे झगा तो आपल्याला कमरबंद देत आहे. Giving you that honor. वो आपको आदर देता है. तो तुम्हास आदर देत आहे. Amen. He wants to also make you content for the truth. वो आपको विश्वास में और सच्चाई में स्थिर होने के लिए उस पे तृप्त रहने के लिए कहता है. आणि तो तुम्हास विश्वासामध्ये सत्यामध्ये स्थिर राहण्याकरिता सांगत आहे. He is over this government, over the church, house of God, household of faith, and over the spirit baptized believers. और वही वो परमेश्वर के कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किए वे सारे परमेश्वर के लोगों के ऊपर वही राज्यत्व करने वाला प्रभुता करने वाला है. आणि त्या सर्व मंडळीवरती आणि पवित्र आत्म्याचे अभिषेक बप्तिस्मा घेतलेल्या विश्वासणाऱ्यांवरती तो परमेश्वर सत्ता गाजवितो. The keys of the house of David are in his hand. He is giving you and I the same power and authority. और उस देखो दाऊद की घराने की कुंजी है वर्तमान उसके हाथ में और वही वो सारे सामर्थ अधिकार वो आपको देता है. आणि दाविदाच्या घराण्याची किल्ला त्याच्या हाती आहे. पहा ते सर्व सामर्थ्य अधिकार तो तुम्हास देत आहे. He is giving you that same victorious life. वही जय जीवन वो आपको दे रहा है. आणि तेच विजयी जय जीवन तुम्हास तो देत आहे. Let's also join Jesus to humble ourselves. आइए हम लोग यीशु मसीह के साथ जुड़ जाए अपने आप को नम्र करें. या आपण ख्रिस्तासोबत जुळूया आणि स्वतःस नम्र करूया. Let's be constrained by the love of God to hate our lives. हमारे जीवन को घृणा करने के लिए परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करने दे. आणि आपल्या जीवनाचा तिरस्कार करण्याकरिता ख्रिस्ताची प्रीती आपल्याला मदत करू दे. He will defend, he will counsel us. वो हमें सलाह देगा आणि तो आपल्याला बोध करेल सल्ला He देईल. will now guide us with his counsel and receive us up to glory. और वो हमें सलाह दे करके अगुवाई करके महिमा की ओर ले जाएगा. आणि तो आपल्याला सल्ला देईल मार्गदर्शन करेल त्याच्या गौरवामध्ये तो आपल्याला He will घेऊन जाईल. reveal all the hidden truths so that we can know how to become perfect as he और is. जैसे वो सिद्ध वैसे सिद्ध बनने के लिए सारी गुप्त बातें में बताएगा. आणि त्याप्रमाणे बनण्याकरिता सर्व रहस्यमय गोष्टी तो आपल्याला He सांगेल. will defend Zion and Jerusalem. सिय्योन यरूशलेम की वही रक्षा करेगा. सियोन यरूशलेमेचे तो संरक्षण He will करेल. defend this truth. वो सत्य का रखवाला बनेगा. आणि तो सत्याचा बचाव He is करेल. giving you the authority and power right now. अभी वो आपको शक्ति अधिकार दे रहा है. आता तो तुम्हाला शक्ती अधिकार Shall we देता है. close our अपने आंखों को eyes? बंद करो. या आपले डोळे बंद करा. You are going to become an overcomer. आप जयवंत बनोगे. तुम्ही जयवंत व्हाल. Amen. After the chorus is sung, we are going to receive that एक anointing. गीत गा करके एक नया अभिषेक को हम लोग पाले. एक गीत गाऊन आपण नवीन अभिषेक प्राप्त करूया. He who has all power in heaven and earth is giving you the same authority and वो power. जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है वही आपको अधिकार दे रहा है. ईश्वर का पृथ्वीचे अधिकार असलेले सर्व अधिकार तो तुम्हास देत आहे. Amen. Hallelujah. Hallelujah.